Testing my audio quickly. Testing my audio quickly. Audio is working fine. Now I would test my desktop. लिमिट है, ये ऐसे करते हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन तो ऐसे भी कर सकते थे, गैस लिमिट ना लगाते, ऐसे ही डायरेक्टली ऑपरेशन से गैस कैलकुलेट करते और तुरंत उसको पे कर देते माइनर को। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वहाँ Both audio and desktop is working fine, so we would get back to it. We had an hour left of this video that we're going to get done. Then we would take things out of our to-do list and probably arrange our to-do list first. Then we'll take one thing up from here and then watch or explore it. I cannot wait to get my hands dirty in blockchain, but then I think I'll spend a month or two just exploring the theories. I think then while working with it, it would be more fun than it would be without. Yeah, here we are. वहाँ पे अगर लेट्स से आप कोई हैकर हो या फिर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिसने एक ऐसा प्रोग्राम लिख दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला गया। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, एक तो आपके अकाउंट से लगातार ईथर डिटेक्ट होता जाएगा एक तरह से, क्योंकि भाई आपने एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर दिया। अब वो होगा क्या, वो लगातार लूप चलेगा तो आपके अकाउंट से तरह से ईथर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, एक तो आपका लॉस होगा। दूसरी चीज इससे क्या होगा, हमारा नेटवर्क जो है ब्लॉकचेन का वो पूरी तरह से लो चला जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपकी तरफ पूरा एक प्रोग्राम लगातार रन कर रहा है। तो गैस लिमिट लगाने से क्या होगा, एक कैप लगा दिया गया, एक कैप लगा दिया गया जो कि बताता है कि भैया अगर ट्रांजैक्शन मतलब ये प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम है, अगर ये इस गैस लिमिट से ज्यादा कर रहा है तो उसको तुरंत रोक दो। मतलब जैसे ट्रांजैक्शन में 21,000 यूनिट थी, तो अगर हम ये करेंगे 21,000 यूनिट्स का, अगर ट्रांजैक्शन हमने कोई कुछ मतलब कुछ नहीं तरह से कर दिया कि ट्रांजैक्शन से ज्यादा ले रहा है कि गड़बड़ है, मतलब कि ट्रांजैक्शन में तो इतना लगना नहीं चाहिए था, मतलब कि कोई हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है या फिर हमारे सिस्टम को डाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही उसने क्या किया, गैस लिमिट जैसे ही 21,000 ज्यादा पहुंची, उसने तुरंत से वहां पे उसको रोक दिया, उस प्रोग्राम को, उस ट्रांजैक्शन को, कहा भाई अब तो लिमिट ज्यादा हो रही है, इससे ज्यादा हम चलने नहीं देंगे। तो गैस लिमिट के थ्रू आप डॉस अटैक्स, इस तरह के जो अटैक्स होते हैं इसके थ्रू पूरे सिस्टम को डाउन कर दिया जाता है, उसको भी रोक पाते हो। इसलिए भी गैस लिमिट की जरूरत होती है। तो गैस लिमिट का यूज दो जगह है, एक तो ट्रांजैक्शन फीस कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा आपको डॉस अटैक जैसी चीजों से बचाने के लिए। पर ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल है ये, जहां हम लोग एक्चुअली में देखेंगे कि हमारी इथेरियम की ब्लॉकचेन दिखती कैसी है, हमारे इथेरियम के ब्लॉक्स दिखते कैसे हैं, इथेरियम की ब्लॉक्स में क्या फीस होती है, और इसको प्रैक्टिकली लाइव हम लोग देखेंगे अभी इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। तो मैं आ गया हूं वेबसाइट etherscan.io/blocks पे। इस वेबसाइट को आप भी सर्च कर सकते हैं अपने गूगल पे, और मेरे साथ चाहे तो अपने बाग पे इसको जरूर से चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही वंडरफुल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको पूरे जो भी ईथर्स में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी इथेरियम ब्लॉकचेन में समय ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसका पूरा लाइव जो होता है वो यहाँ पे शो होगा। तो जैसे कि अभी आप देखेंगे, मैं हूँ यहाँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। और ओके, इसमें ठीक है, तो थोड़ा सा मैं छोटा भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ ब्लॉक्स जो कि हमारी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक ब्लॉक के बारे में उनका नंबर दिया गया है, एज दिया, मतलब कितने टाइम पहले ये डेवलप हुए। टीएक्सएन का मतलब होता है ट्रांजैक्शन आईडी, क्या है उनकी ट्रांजैक्शन आईडी जो भी उसमें रखी हुई है। अंकल्स, अंकल्स का मतलब है जब दो ब्लॉक्स एक टाइम पे क्रिएट होते हैं तो उन्हें कहा जाता है अंकल्स। और मैंने इस तरह के सारे वीडियो में पहले बता दूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब मैंने पढ़ाई थी, ब्लॉकचेन का जो कोर्स करवाया था, उसमें सारी चीजें बहुत ही डिटेल में किस तरह से ब्लॉक वर्क करते हैं, क्या होता है प्रीवियस हैश, सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बताई हुई है। अगर आप नहीं देखा है वीडियो में आई बटन में लिंक शेयर कर दें, वहां से आप जरूर से देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ब्लॉकचेन की पूरी टेक्नोलॉजी वर्क करती है, क्योंकि इथेरियम भी एट द एंड हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करता है। तो वहां से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। मैंने एक फील्ड को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे ब्लॉकचेन की कोर्स में, और यहाँ पे सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट, मतलब ये सारी फील्ड्स हम तो देख रहे हैं। एक पर ब्लॉक को लेते हैं और इसको क्लिक करते हैं, ये ब्लॉक नंबर हो गया हमारा, तो ये ब्लॉक नंबर है, हाइट दी हुई है, ये टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प के मैंने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया, तो जरूर से देखिएगा, आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, जरूर से देखना, बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया टाइम स्टैम्प के ऊपर। फिर ट्रांजैक्शन के बारे में है, माइंड बाय मतलब टाइम स्टैम्प का भी क्रिएट हुआ था ट्रांजैक्शन, इसमें 195 ट्रांजैक्शन है और 72 इंटरनल ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट इंटरनल ट्रांजैक्शन है। माइंड कौन किया है इसके बारे में, ब्लॉक रिवॉर्ड, अंकल्स रिवॉर्ड, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर से देखिएगा, वहां पे मैंने बताया कि इस तरह से डिफिकल्टी लेवल को कैलकुलेट किया जाता है। गैस यूज, साइज, गैस यूज अभी हमने देखा, गैस यूज, यहाँ देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं गैस यूज और गैस लिमिट। तो गैस यूज मतलब कितनी गैस यूज हुई और कितनी हमें लिमिट लगाई गई थी, देखेंगे यहाँ पे गैस लिमिट क्या है, हमारी गैस यूज से ज्यादा है, राइट। तो गैस लिमिट अगर ज्यादा है तो मतलब इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे और जो भी अमाउंट बचेगा वो वापस कर दिया जाएगा हमारे यूजर को जिसने ये किया है। एक्स्ट्रा डेटा हैश, तो हैश के बारे में भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है, प्लीज उसको जरूर से देखिएगा, आपने नहीं देखा है तो। पैरेंट हैश मतलब प्रीवियस हैश हो गया, शाह थ्री अंकल्स, तो मैंने शाह 56 के लिए पूरा अच्छा सा वीडियो बनाया है, वो भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगा, आई बटन करूंगा, इसमें बताया, आई बटन स्टेट रूट नॉन नॉन के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, और स्टेट रूट के बारे में मैंने बना, देखते हैं अगर इस कोर्स में ये वैलिड, मैं डेफिनेटली स्टेट रूट पे वीडियो बनाऊंगा। और नॉन पे भी मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, किस तरह से नॉन करते हैं, क्या है नॉन, इस पे भी पूरा मैंने वीडियो बनाया जो कि माइनस के लिए यूज होता है, जो माइनस यूज करते हैं जब उनको रिवॉर्ड पाना होता है तो वो नॉन को चेंज करके रिवॉर्ड्स को गेन कर पाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नॉन पे वो डिफिकल्टी लेवल को चेक करते हैं ताकि वो टारगेट के बिलो पहुंच सके। तो ये सारी चीज होती है नॉर्मली हमारे ब्लॉकचेन में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी ये इस वेबसाइट पे इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लाइक कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हो रहे हैं, सारी चीजों का रिवॉर्ड यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल है। और यही सबसे अच्छी बात होती है हमारी ब्लॉकचेन की, सब कुछ हमारे सामने होता है, कुछ भी चीज छुपी नहीं होती। आई होप आप, और यही सबसे अच्छी बात होती है हमारी ब्लॉकचेन की, सब कुछ हमारे सामने होता है, कुछ भी चीज छुपी नहीं होती। ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हो रहे हैं, सारी चीजों का रिवॉर्ड यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल है। और यही सबसे अच्छी बात होती है हमारी ब्लॉकचेन की, सब कुछ हमारे सामने होता है, कुछ भी चीज छुपी नहीं। Block each
Okay, transactions. Ethereum blocks contains almost like 200 to 300 transactions. I guess 200 transactions on average, it seems. Gas used is around 15,000. 2.4 ethers. 2.2 ethers. Cool. Minor. नहीं होती। आई होप हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोई चैनल में आप सबका स्वागत है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद वाला वीडियो जो आएगा जो कि होगा द डाउ अटैक, उसमें आपको काफी नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे अबाउट ब्लॉकचेन कि क्या सच में ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है या नहीं है। तो वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मगर इस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूर से जुड़े रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से दिखती है? कुछ इस तरह से, जहां पे एक हायरार्की होती है, डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, कुछ एम्प्लॉइज होते हैं और सबके अपने असाइन टास्क होते हैं। मैनेजर का एक डायरेक्टर को कुछ पर्टिकुलर काम होता है, मैनेजर का काम होता है अपने से हायरिंग हो गया, किसी को निकालना हो गया, इस तरह के मैनेजर के अपने कुछ काम होते हैं, काम करवाना हो गया। एम्प्लॉइज के अपने काम होते हैं, जैसे अगर वो कोई आईटी कंपनी में तो उसको कोडिंग करनी होगी, उसको डेवलपमेंट साइड में कुछ करना होगा, टेस्टिंग का काम होगा। इस तरह के सबके अपने रोल डिसाइड होते हैं और इसी तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। और इसमें ध्यान देखने वाली चीज है कि अगर इसको पूछे कि इसका कंट्रोल किसके पास होता है, तो इसका कंट्रोल होता है हमारे डायरेक्टर के पास, या फिर हम कह सकते हैं जो भी इस कंपनी को ओन कर रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन को ओन कर रहा है, उसी के पास पूरा कंट्रोल होता है। जो वो डिसाइड करता है एट द एंड क्या होता है वही माना जाता है। ये तो एक चीज होगी हमारी एक टिपिकल एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन की। और अगर एक चीज देखी जाए इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे टास्क होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि काफी रिपीटेटिव नेचर की होती है। रिपीटेटिव नेचर का मतलब क्या है कि इसमें मतलब कोई बहुत ज्यादा आपको डिसीजन नहीं लेना या फिर कोई बहुत लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत नहीं है। जैसे मान ले We are almost at the end of this course, but we did not get to know anything about proof of stake. We started this course because we were trying to differentiate between proof of work and proof of stake. What I got to know through all these 6 hours of videos, the additional knowledge that I have now. There were some previous knowledge on blockchain that I already had, but here I only got an additional knowledge of the structure of the block, and a little bit more familiarity with what goes on when a node takes up a block, what is a mempool and things like that. A little in depth, a little deeper scratch, but just a scratch on the surface. Maybe a little deeper scratch. हैं कि हम लोग को किसी कस्टमर के डाउट सॉल्व करना है, एग्जांपल तो हमें उस कस्टमर के डाउट सॉल्व करने तो डाउट कितने होंगे, कुछ मैक्सिमम 5 या 10 या कुछ 20 30। तो हम क्या कर सकते हैं उसको एक एज अ फॉर्म ऑफ लाइक चैट बॉक्स या फिर अगर आपने देखा होगा व्हाट्सएप का यूज होता है जहां पे आप बस कुछ क्वेश्चंस अपने लिखते हो, वहां से आपको आंसर मिल जाता है। मतलब ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो काफी रिपीटेटिव होते हैं और जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आप उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन करते हो तो जरूरत है आपको कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और कॉस्ट जो ह्यूमन को ऑपरेट करने का देना पड़ता है और ऑपरेशन को जो करवाना पड़ता है हमें उसके लिए भी अलग से कॉस्ट देना पड़ता है। तो इस चीज का ही एक सोल्यूशन क्या है, वो है डाओ, जिसे हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डाओ है क्या? डाओ कुछ नहीं, सिर्फ I'll get some water for myself. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ प्रोग्राम है। तो जैसे कि मैंने कहा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि काफी रिपीटेटिव होती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा हमें लॉजिकली डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक इफ एल्स कंडीशन पे वर्क करेगा कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। कुछ इस तरह की कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को बना सकते हैं जो कि एकदम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वर्क करेगा। मतलब कि जैसे अगर ये कोई मतलब पर्टिकुलर काम आता है कि ये वाला काम है तो चलो इसको इस वाले प्रोग्राम में बता दो, ये वाला काम है तो इस वाले प्रोग्राम में बता दो। इस तरह से एक हायरार्की भी मेंटेन हो रही है। मतलब बेसिकली हायरार्कियां होती नहीं, क्योंकि सब कुछ एक प्रोग्राम पे लिखा है। मतलब मैं क्या बताना चाहूंगा कि यहाँ पे भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, ठीक उसी तरह से हमारी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड में ये ब्लॉकचेन पे वर्क कर रही है और वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ऑटोनोमस क्योंकि अपने से वर्क कर रही है, क्योंकि इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी स्टूडेंट करिए, सिर्फ प्रोग्राम रन कर रही है, इसीलिए कहा जाता है ऑटोनोमस। और ये एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम कर रही है, इसीलिए कहा जाता है इसे डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग एग्जांपल देंगे, वहां से आपको इसकी अहमियत का और पता चलेगा कि क्या इसकी और अहमियत है, क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतनी अच्छी चीज है। तो आइए पहले कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं डाओ और एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। पहली चीज जो डाओ से बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पूरी डेमोक्रेटाइज होती है। मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो कंट्रोल करती है, वहां पे सब कुछ चल रहा होता है वोटिंग के थ्रू। मतलब आप वोट करोगे, जितने ज्यादा पर्टिकुलर डिसीजन पे वोट होंगे उसी तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी। जबकि इसमें क्या होता है, पूरा हायरार्की पे बेस्ड होता है। आप जितना टॉप पे होगे आपकी अथॉरिटी उतनी ज्यादा होगी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, ज्यादातर केसेस में यही होता है जहां पे हायरार्की फॉलो की जाती है और जो टॉप पे होता है उसी की बात मानी जाती है। तो यहाँ पे कभी वोटिंग की जरूरत पड़ती है, कभी जरूरत नहीं भी पड़ती है। यहाँ पे आपको जब वोट होते हैं तो वहां पे आपको क्या करना है, काउंट करने की जरूरत है। जिसने भी वोट किया प्रोग्राम अपने आप उसको क्या करेगा, काउंट करेगा, उसमें कोई चीटिंग नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ पब्लिक में मतलब है। आपको देखना ये पूरा ब्लॉकचेन का जो भी कोड होता है, जो हमारा सोर्स कोड होता है, मैंने बताया है अपने पिछले वीडियोस में भी, वो पूरा तरह से पब्लिक होता है, सब उसको देख सकते हैं। तो इसमें कोई चीटिंग जैसी चीज हो नहीं सकती। मगर यहाँ पे सब कुछ क्या होता है, ह्यूमन हैंडल होता है, तो चांसेस है कि चीटिंग हो सके और ये भी सब कुछ प्राइवेट होता है। तो डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि यहाँ पे चीटिंग की जा सके। यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटिकली हैंडल हो रही है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ह्यूमन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है और ये पूरी सेंट्रली कंट्रोल होती है। मतलब ये कोई एक सेंटर पे एक होता है जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो ये पूरी डिसेंट्रलाइज्ड नेचर की होती है, सब कुछ वोटिंग पे बेस्ड होता है। अब ये
अब ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की कहाँ पे हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, कहाँ पे इनका यूज सबसे ज्यादा हो सकता है। लेट्स से यहाँ पे और आपको किसी एनजीओ में डोनेट करना है पैसे। अगर आपको इस एनजीओ में डोनेट करना है पैसे, तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना होगा, इस एनजीओ पे ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि इसमें काम कौन कर रहा है, ह्यूमन, और एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन पे ट्रस्ट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, स्पेशली जब बात होती है मनी की, राइट। तो उस पर्टिकुलर केस में तो आप क्या होगा, ट्रस्ट नहीं पाओगे एनजीओ पे। अब अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे एनजीओ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एनजीओ का भी लॉस है, क्योंकि अगर ये एक अच्छी एनजीओ है और आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो, तो ये क्या अपना अच्छा काम भी नहीं कर पाएगी। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है जब हमें किसी को पैसा देना होता है या डोनेट करना होता है किसी एनजीओ को, तो हमें ये नहीं पता होता कि बेसिकली वो हमारे मनी का सही यूज करने वाले हैं कि गलत यूज करने वाले हैं। अगर हमें ये पता चल जाए तो बहुत ही इजीली लोग डोनेट करेंगे और काफी कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं सोसाइटी में। बट ये ट्रस्ट हम बिल्ड नहीं कर पाते एनजीओ पे, क्योंकि एनजीओ क्या है, ह्यूमन है, और ह्यूमन में क्या है हमें नहीं पता कि अंदर एनजीओ क्या चल रहा है। तो इसकी जगह इस एनजीओ एक ऑर्गेनाइजेशन की हम क्या कर सकते हैं, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, जहां पे सिंपल से रूल्स होंगे कि ये पैसा आ रहा है, इतने पैसे में से इतना परसेंट एनजीओ के पास जाएगा, मतलब कि जैसे 5%, 10%, 20% जो भी वो कमीशन को चाहिए ऑपरेट करने के लिए, और रिमेनिंग अमाउंट किसके पास जाएगा, जिसको उसकी नेसेसिटी है। तो आपके पास ये ट्रस्ट होगा, क्योंकि वो पूरा सोर्स कोड आपके पब्लिक ब्लॉकचेन पे अवेलेबल होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं कि एनजीओ कर क्या रहा है आपके पैसों के साथ, तो आपका ट्रस्ट मेंटेन होगा। और एनजीओ जैसी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो सच में सोसाइटी के लिए कुछ कर रही है, उनको भी करने का आगे मौका मिलेगा। तो आई होप आपको समझ आएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे द डाओ अटैक, क्या हुआ था द डाओ अटैक में, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक टू माय चैनल कोडी चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है द डाओ अटैक, और इसी को समझने के बाद आपको समझ में मजा आएगा हार्ड फोर्क और सॉफ्ट फोर्क जो आने वाली वीडियोस में कवर करूंगा। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक है द डाओ। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जब मैं बात कर रहा हूं द डाओ की, तो द डाओ एक ऑर्गेनाइजेशन है ना कि कॉन्सेप्ट। मतलब कि जो इसके पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था वो था डाओ, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था द डाओ। तो द डाओ की जब मैं बात कर रहा हूं तो बेसिकली एक एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डाओ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और इसको किसने एस्टैब्लिश किया, इसको एस्टैब्लिश किया था हमारे जर्मन की स्टार्टअप ने, जिसका नाम था स्लॉक। 2016 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका वर्क क्या था, इसका वर्क बड़ा सिंपल था, ये एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट फंड था जहां पे वेंचर कैपिटलिस्ट क्या कर सकते थे, इसके थ्रू किसी भी स्टार्टअप में क्या कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। अब ये वर्क किस तरह से करता था, इसकी वर्किंग बहुत ही सिंपल है कि जो भी हमारे डाओ में इन्वेस्ट मतलब इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे उनको क्या करना होता था, सिंपली कुछ ईथर देने होते थे और उसके बेसिस पे उनको मिलते थे डाओ टोकन्स। और इस डाओ टोकन के थ्रू क्या होता था, इस डाओ टोकन के थ्रू ही ये डिसाइड करते थे कि किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मतलब हमें एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। मतलब कि जब डाओ कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी प्रपोज करता था कि हां हमें इस पर्टिकुलर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो चीज अनसेंट्रलाइज्ड है, तो हमको यहां पे किस पे करना होता था, वोटिंग सिस्टम पे। तो इसने कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेट्स से कहा कि भाई ये चीज करनी चाहिए, ये पर्टिकुलर स्टार्टअप में लेट्स से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ इस तरह से समझ लीजिए। तो ये जिनके पास ये टोकन्स होते थे उसी के थ्रू ये वोट करते थे कि बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो यही थी द डाओ की पूरी वर्किंग। अब द डाओ अटैक है, तो ये इसको समझते हैं कि किस तरह से द डाओ अटैक हुआ और क्या-क्या चीजें हुई इसमें। तो पहली बात तो जो द डाओ थी ये कब लाइव हुआ, ये समझ नहीं तो ये वर्क आया। है। और इसको किसने एस्टैब्लिश किया, इसको एस्टैब्लिश किया था हमारी जर्मन की स्टार्टअप ने, जिसका नाम था स्लॉक। 2016 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका वर्क क्या था, इसका वर्क बड़ा सिंपल था, ये एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट फंड था जहां पे वेंचर कैपिटलिस्ट क्या कर सकते थे, इसके थ्रू किसी भी स्टार्टअप में क्या कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। अब ये वर्क किस तरह से करता था, इसकी वर्किंग बहुत ही सिंपल है कि जो भी हमारे डाओ में इन्वेस्ट मतलब इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे उनको क्या करना होता था, सिंपली कुछ ईथर देने होते थे और उसके बेसिस पे उनको मिलते थे डाओ टोकन्स। और इस डाओ टोकन के थ्रू क्या होता था, इस डाओ टोकन के थ्रू ही ये डिसाइड करते थे कि किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मतलब हमें एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। मतलब कि जब डाओ कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी प्रपोज करता था कि हां हमें इस पर्टिकुलर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो चीज अनसेंट्रलाइज्ड है, तो हमको यहां पे किस पे करना होता था, वोटिंग सिस्टम पे। तो इसने कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल लेट्स से कहा कि भाई ये चीज करनी चाहिए, ये पर्टिकुलर स्टार्टअप में लेट्स से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कुछ इस तरह से समझ लीजिए। तो ये जिनके पास ये टोकन्स होते थे उसी के थ्रू ये वोट करते थे कि बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो यही थी द डाओ की पूरी वर्किंग। अब द डाओ अटैक है, तो ये इसको समझते हैं कि किस तरह से द डाओ अटैक हुआ और क्या-क्या चीजें हुई इसमें। तो पहली बात तो जो द डाओ थी ये कब लाइव हुआ, ये 34 2016 में। मतलब द डाओ एक सिंपली समझ लीजिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रोग्राम लिख दिया गया है ब्लॉकचेन पे, और इसकी वर्किंग क्या थी, सिंपली इन्वेस्टर से पैसे लेना मतलब ईथर लेना और उसके बेसिस पे उनको डाओ टोकन देना। तो ये थी सिंपल सी इसकी वर्किंग। 15/5/2016 मतलब कुछ 15 डेज बाद आप समझ सकते हैं क्या हुआ। इसने कम से कम मतलब सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में ही इसने $100 मिलियन रेज कर लिया। जी हां, जस्ट सोचिए 15 दिन में $100 मिलियन रेज कर लिया। और कहा जाता है कि इसने $150 मिलियन तक का क्राउड फंडिंग की थी, जो कि सबसे बड़ी क्राउड फंडिंग थी। तो इतने कम दिनों में जो की थी, तो ये चीज इसने कर पाया था हमारा द डाओ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी। अब हुआ क्या, 16/6/2016 पे इस पे हुआ एक अटैक। अब ये अटैक क्या था, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो द डाओ है क्या, सिंपली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या, एक प्रोग्राम। और प्रोग्राम में अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो क्या होगा, सिंपली आपको दिक्कत होगी, राइट। आपका प्रोग्राम गलत तरह से रन करेगा और इसी का फायदा उठाया एक हैकर कह सकते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन ने, उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया। उन्होंने देखा कि हमारे इस जो डाओ प्रोग्राम लिखा हुआ है कि किस तरह से इसका ऑपरेशन होना है उसमें कुछ गड़बड़ है। तो उन्हें इस चीज का जब पता चला तो उन्होंने क्या किया, उस जो गड़बड़ थी प्रोग्राम को उसको अपनी तरफ के लिए यूज किया और उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया द डाओ जिसमें खूब सारी इथर्स इन्वेस्टेड थे, जो टोकन थे वो क्या किया अपने पास लेना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने पूरा जो डॉलर से 60 to 65 मिलियन डॉलर तक का इन्होंने अमाउंट क्या कर लिया, द डाओ से निकाल लिया। और ये कोई इन्होंने गलत काम नहीं किया, लाइक इन्होंने भी हैकिंग या कुछ इस तरह की चीज नहीं की। इन्होंने सिंपली क्या किया, जो प्रोग्राम लिखा था उसमें प्रोग्राम में गड़बड़ थी, अगर प्रोग्राम में गड़बड़ थी तो उस गड़बड़ी का ही इन्होंने फायदा उठाया। मतलब कि हमारे जो इथर की ब्लॉकचेन उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, जो ये प्रोग्राम लिखा गया द डाओ पे, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना गया उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम थी। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम का इन्होंने फायदा उठाया। मतलब ये कोई हैकिंग जैसी चीज नहीं हुई, सिंपली लेट्स से प्रोग्राम में कुछ कंडीशंस लिखी थी, उस कंडीशन को उन्होंने कहा अच्छा ये कंडीशन यहाँ पे फेल हुई है, तो उन्होंने उसी का फायदा उठाते हुए 60 से 65 मिलियन डॉलर का क्या किया, एक तरह से मतलब एक तरह से चोरी की और काफी बुरा हाल कर दिया। तो द डाओ के इन्वेस्टर्स भी भाई एक तरह से उनका पूरा जो इन्वेस्टमेंट था वो द डाओ में लगा हुआ था और ये लोग क्या कर रहे थे, उसको निकाल रहे थे बिना कोई रोक टोक के, क्योंकि सब कुछ क्या होता है हमारा छुपा होता है जब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन, राइट। फिर फर्स्ट प्रपोजल निकला कि भाई कि ये जो अटैक हुआ है इसका क्या किया जाए। मतलब कि जो फर्स्ट प्रपोजल था ये कब हुआ, हमारा 17/6/2016 में फर्स्ट प्रपोजल हुआ कि इस अटैक को हमें क्या होगा, रोकना होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा था, इन्वेस्टर का जितना भी मनी था वो जितना भी मतलब उन्होंने लगाया था सब कुछ क्या होता है एक तरह से खत्म हो रहा था। तो इस चीज का प्रपोजल लगाया, क्योंकि और इस चीज को होने में मतलब कि क्योंकि एक काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, जब हम लोग हार्ड कोड और सॉफ्ट कोड पढ़ेंगे वहां पे मैं कवर करूंगा। तो वहां पे क्या था कि 30 डेज का इनके पास टाइम था ये सोचने के लिए कि किस तरह से इस अटैक को रोका जाए। तो ये चीज आप चाहे तो थोड़ा गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, मगर मैं ये बता दूं कि 30 डेज का इनके पास पूरा टाइम था द डाओ जो ऑर्गेनाइजेशन की जो कम्युनिटी थी उस समय ब्लॉकचेन की, कि भाई इस अटैक को किस तरह से रोका जाए। फिर जाके एक प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ जिसे कहा गया हार्ड फोर्क, और वो 27/2016 में एक्सेप्ट हुआ, जिसमें कि हार्ड फोर्क किया गया। ये हार्ड फोर्क क्या है मैं डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में आपको क्लियर करूंगा। पर यहाँ पे जो सीखने वाली बात है, जो समझने वाली बात है वो ये है कि द डाओ अटैक क्यों हुआ। द डाओ अटैक किसी मतलब हैकर ने या फिर हैकर हो ही सकता है, बट किसी ने कोई प्रोग्राम चेंज नहीं किया, प्रोग्राम में पहले से गड़बड़ी होने की वजह से क्या हुआ ये अटैक हुआ। इसलिए कहा जाता है कि जब आप कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाइए तो उसको बहुत ध्यान से बनाइए, उसको सारे अच्छे से टेस्टेड सारे डिप्लॉयमेंट के जो स्टेज होते हैं उसको बहुत अच्छे से कवर अप करने चाहिए। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली होती है। और कुछ जब ये द डाओ अटैक हुआ तो वहाँ पे जो हार्ड फोर्क हुआ उसकी वजह से हमारी जो इथेरियम की ब्लॉकचेन थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, एक हुआ इथेरियम क्लासिक और एक हुआ इथेरियम। और ये दोनों क्या है, ये चीजों में जैसे मैंने बताया मैं हार्ड फोर्क और जब सॉफ्ट फोर्क पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ये स्प्लिटिंग क्या हुई, कैसे ये स्प्लिटिंग हुई, क्या है ये स्प्लिटिंग, सारी चीजें हम डिटेल में कवर अप करेंगे जब हम हार्ड फोर्क और सॉफ्ट फोर्क का टॉपिक कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। It is raining outside. में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हार्ड फोर्क। तो आइए शुरू करते हैं। तो हार्ड फोर्क क्या है? हार्ड फोर्क समझने से पहले हमने जो बात की थी द डाउ अटैक, जहां पे उन्होंने देखा था कि जो हैकर थे या फिर ग्रुप ऑफ पीपल थे, उन्होंने क्या किया था, हमारे द डाउ से ईथर चोरी करना शुरू कर दिया था, ईथर को चोरी करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे क्या हुआ था, इन्वेस्टर्स का लॉस होना शुरू हो गया था। और वो ऐसा क्यों कर पाए थे? क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया था द डाउ के लिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसमें कुछ गलती थी, जिसकी वजह से जो हैकर्स थे या जो ग्रुप ऑफ पीपल थे वो इजीली वहां से ईथर को एक्सट्रैक्ट कर पाए। अब यहाँ पे होगी प्रॉब्लम ये होगी कि जो इन्वेस्टर्स उनको लगा कि ये तो उनके साथ गड़बड़ हो रहा है, कि उनको लॉस हुआ है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि इस तरह से लिखा गया था, गड़बड़ इस तरह की थी कि उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता था। तो उस समय क्या था कि ईथर की जो कम्युनिटी थी उसको एक डिसीजन लेना था, और वो डिसीजन था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस लाने का, क्योंकि अगर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं लाते तो इन्वेस्टर्स को हो जाता लॉस, और काफी ज्यादा लॉस होता है इन्वेस्टर्स को। तो इस तरह के लॉस को रोकने के लिए क्या किया गया, वहां पे एक प्रपोजल रखा गया जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस लाए गए, और वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस लाए गए उसी की वजह से ये दो पार्ट्स में ब्लॉकचेन हमारी डिवाइड हो गई। एक थी हमारी क्लासिक और एक थी हमारी इथेन। अब ये जो दो कम्युनिटीज थी इनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे। जो हमारी इथेन क्लासिक थी उसका कहना था कि भाई एक बार अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिप्लॉय हो गया तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमारी इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन की वजह से पहली चीज, और दूसरी चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए जब वो एक बार डिप्लॉय हो जाए। तो ये इनके व्यू पॉइंट, इनका कहना था कि हमें हमेशा प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। जबकि ये जो न्यू इथेरियम कम्युनिटी यहाँ से लॉन्च हुई इसके बाद से इनका कहना था कि नहीं भाई ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी पहली बार हम लोगों ने इस तरह का मेजर स्टेप लिया है, ये मतलब हमारे एक न्यू प्रॉब्लम है जो हमने कभी नहीं फेस की। तो इस बार में पहली गलती एक तरह से उनको कहना था कि माफ होनी चाहिए, इसलिए हमें क्या करना होगा, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेंजेस लाने होंगे, उसमें कुछ अपग्रेडेशन लाने होंगे, तभी हम इस हाइक को, इस हैक को रोक सकते हैं। तो इसी वजह से इथेरियम क्लासिक और इथेरियम में ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। जहाँ पे इथेरियम क्लासिक वही पुरानी इथेरियम की चेन थी जो कि मानती थी कि भाई हमें प्रिंसिपल को फॉलो करना है, और इथेरियम जो नई वर्जन ऑफ इथेरियम थी इनका कहना था नहीं, हमें यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस लाने। तो ये कब हुआ? ये हुआ था हमारे 27/2016 में, और 1999999 ब्लॉक के बाद ये स्प्लिट हुआ था। तो अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से हार्ड फोर्क में स्प्लिट होता है। बट आइए पहले देखते हैं हार्ड फोर्क में क्या, हार्ड फोर्क की डेफिनेशन क्या है। तो जो हमारा हार्ड फोर्क होता है उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटिंग द प्रोटोकॉल एंड फाइनल प्रोसीजर इज अपग्रेडेड। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लॉकचेन की जो कम्युनिटी थी वो डिसाइड करती थी कि हम लोग सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस लाएंगे। अब ये जैसे यहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस साइड, तो यहाँ पे जो इथेरियम की कम्युनिटी जो पुरानी वाली कम्युनिटी जो यहाँ पे सब कुछ सेम था, इसके बाद से स्प्लिट हुआ। तो इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं हम लोग एक नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड लाएंगे, जिसमें क्या होगा कि एक तरह से मान लीजिए उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रोकेंगे जो कि इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है, मतलब एक तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस लाएंगे। तो उसी की वजह से क्या हुआ, उसी की वजह से हमारे ये नए ब्रांचेस में डिवाइड हुआ। तो इसमें क्या होगा, जैसे एक यूजर ने जो उस कम्युनिटी का पार्ट है उसने क्या किया, अपने सॉफ्टवेयर को नए वर्जन में वो किया, लाइक अपग्रेड किया एक तरह से, तो जो भी ओल्डर सॉफ्टवेयर की जो भी चीजें थी उसको क्या हो गया ना, बड़ा एक तरह से ऑब्सोलीट हो गई, वो किसी काम की नहीं रही। तो वंस अ यूजर अपग्रेड देयर सॉफ्टवेयर दैट वर्जन ऑल ट्रांजैक्शन फ्रॉम ओल्डर सॉफ्टवेयर इफेक्टिवली क्रिएटिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ द ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही चीज हुई। तो वंस अ यूजर अपग्रेड देयर सॉफ्टवेयर, Rejects all the transaction from the older software. So what happens to all the money that I've collected or spent? सॉफ्टवेयर दैट वर्जन ऑल ट्रांजैक्शन फ्रॉम ओल्डर सॉफ्टवेयर इफेक्टिवली क्रिएटिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ द ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही चीज हुई। मतलब इस ब्लॉक के बाद इन्होंने क्या किया, अपग्रेड को वो किया कि हाँ ठीक है हम लोग सॉफ्टवेयर अपग्रेड करेंगे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो गड़बड़ी है उसको एक तरह से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया, जबकि ये जो लोग थे इन्होंने उसी पुराने वर्जन को ही अपने पास रखा और इसी पे अपना जो इथेरियम था उसको चलाया। तो ये चीज हुई, इन्होंने नया वर्जन अडॉप्ट किया और इन्होंने ओल्ड वर्जन अडॉप्ट किया, इसी वजह से ये दो नए ब्रांचेस बन गई। However, those who retain the older software continue to process the transaction. सही बात है, क्योंकि जो इथेरियम क्लासिक थी अपने पुराने वर्जन पे वर्क कर रही थी और अभी चल रही थी, उन्होंने नया वर्जन अडॉप्ट कर लिया था, तो इनकी अपनी नई ब्रांच चल रही थी। मतलब दो ब्रांच पैरेलली इथेरियम क्लासिक और इथेरियम की चल रही थी, यहाँ पे एक नया वर्जन था आफ्टर दी सॉफ्टवेयर अपडेट। तो ये बेसिकली होता है हमारा हार्ड फोर्क। अब देखिए हार्ड फोर्क में किस तरह से चीजें होती हैं। अच्छा, हार्ड फोर्क में किस तरह से चीजें होने से पहले हम ये भी देख रहे थे कि ये जो हार्ड फोर्क का सिर्फ इथेरियम में ही नहीं हुआ था, ये हार्ड फोर्क हुआ था हमारे बिटकॉइन के केस में ऑल्सो। तो बिटकॉइन में क्या था कि 476768 मतलब इस ब्लॉक नंबर पे जो बिटकॉइन की कम्युनिटी उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, उस टाइम पे सिगविट जो थी काफी ज्यादा चीज एक तरह से पॉपुलर हुई थी। अगर आपने सिगविट वाला मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, उसको जरूर से देख लीजिएगा। सिगविट कहता था कि भाई क्योंकि हमारा जो ये पब्लिक की है और जो हमारी सिग्नेचर है ये ब्लॉक में काफी ज्यादा स्पेस ले रही है, जिसकी वजह से हमारे ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं, और ज्यादा ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से क्या हो रहा था, ज्यादा टाइम लग रहा था ट्रांजैक्शन को प्रोसेस होने। तो यहाँ पे जो थी हमारी जो बिटकॉइन कम्युनिटी ने इन्होंने क्या किया, सॉफ्ट फोर्क के द्वारा, सॉफ्ट फोर्क हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझिए कि सॉफ्ट फोर्क के थ्रू उन्होंने क्या किया, सिगविट को अडॉप्ट कर लिया। इन्होंने कहा ठीक है हम लोग क्या करते हैं, इसको अडॉप्ट करते हैं सिगविट को, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन रख पाएं। बट हुआ क्या, कुछ ही दिनों बाद, मतलब एक तरह से अगस्त के कुछ ही एक महीने के अंदर ही क्या हुआ, बिटकॉइन कैश करके जो दूसरी कम्युनिटी थी उनका कहना था कि नहीं, जो ये सिगविट वाली चीज आप कह रहे हैं ये हम बहुत ही टेम्परेरी सॉल्यूशन है, हमें क्या करना चाहिए, एक तरह से ब्लॉक के साइज को इंक्रीज करना चाहिए। जनरली अगर ब्लॉक का साइज हम बिटकॉइन की बात करें तो 1 MB का होता है, मगर बिटकॉइन कैश करना नहीं, हम इसको क्या करते हैं 1 MB तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि यही एक परमानेंट सॉल्यूशन है। जो सिगविट है ये बहुत टेम्परेरी सॉल्यूशन है, तो क्यों ना हम लोग 1 MB पे चलते हैं। तो आफ्टर 47858 के बाद हार्ड फोर्क के थ्रू फिर से दो नई ब्रांचेस बनी, एक तो बिटकॉइन के थ्रू जो बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही थी, जहां पे 1 MB का ब्लॉक अभी भी चल रहा था सिगविट के थ्रू, मगर ये जो कम्युनिटी थी इन्होंने सिगविट को अडॉप्ट नहीं किया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा मैं 8 MB के नए ब्लॉक को ही मानूंगा, और इसीलिए दो नई कम्युनिटी बनी, क्योंकि नहीं हम इसको क्या करते हैं 1 MB तक। ये कुछ ही एक महीने के अंदर ही क्या हुआ, बिटकॉइन कैश करके जो दूसरी कम्युनिटी थी उनका कहना था कि नहीं, जो ये सिगविट वाली चीज आप कह रहे हैं ये हम बहुत ही टेम्परेरी सॉल्यूशन है। Sigwit. हमें क्या करना चाहिए, एक तरह से ब्लॉक के साइज को इंक्रीज करना चाहिए। जनरली अगर ब्लॉक का साइज हम बिटकॉइन की बात करें तो 1 MB का होता है, मगर बिटकॉइन कैश करना नहीं, हम इसको क्या करते हैं 1 MB तक बढ़ा देते हैं, क्योंकि यही एक परमानेंट सॉल्यूशन है। जो सिगविट है ये बहुत टेम्परेरी सॉल्यूशन है, तो क्यों ना हम लोग 1 MB पे चलते हैं। तो आफ्टर 47858 के बाद हार्ड फोर्क के थ्रू फिर से दो नई ब्रांचेस बनी, एक तो बिटकॉइन के थ्रू जो बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही थी, जहां पे 1 MB का ब्लॉक अभी भी चल रहा था सिगविट के थ्रू, मगर ये जो कम्युनिटी इन्होंने सिगविट को अडॉप्ट नहीं किया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैं 8 MB के नए ब्लॉक को ही मानूंगा, और इसीलिए दो नई कम्युनिटी बनी, क्योंकि ये कोई सेंट्रलाइज्ड बॉडी तो है नहीं यहाँ पे जो कोई डिसाइड करे, तो यहाँ पे कम्युनिटी के वोट के द्वारा ही ये दो नई ब्रांचेस बन पाई। अब ये किस तरह से होता है हार्ड फोर्क, तो आइए अब इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया जहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से हार्ड फोर्क होगा। ये एक लाइन है जिसके बाद से अपडेशन हुआ, मतलब एक तरह से सॉफ्टवेयर इसी के बाद से अपडेट हुआ। तो ये मैंने टाइम ऐसी लिमिट दी है, डेफिनेटली इस तरह से जरूरी नहीं कि हो, ये कुछ दिन का भी हो सकता है, मैंने ये आपको समझाने के लिए किया है कि 11 AM 12 PM 1 PM में एक घंटे के अंतराल पर कुछ चीजें चेंजेस हो रही हैं। तो हुआ क्या, अभी तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस एरिया में तो कम्युनिटी दोनों की सेम है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है। तो मान लेते हैं कि अगर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक नया ब्लॉक 1 MB का इमर्ज होता है, मतलब कि यहाँ पे किसी माइनर ने, अभी वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ या यहाँ कहने से, क्योंकि अभी तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, हम ये कहते हैं यहाँ पे जो भी माइनर थे उसमें किसी एक माइनर ने एक ब्लॉक को माइन किया, ठीक है 1 MB का ब्लॉक का कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट
अब क्या हुआ, यहाँ पे हो गया हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट। अब लेट्स से मानते हैं कि अभी तक जिन्होंने अपडेट नहीं किया था सॉफ्टवेयर, उन्होंने क्या किया, अभी एक 0.7 MB का ब्लॉक पहले माइन किया, अभी इन्होंने कोई ब्लॉक माइन नहीं किया, ये कम्युनिटी अब नहीं बन गई है, हैवंट अपडेटेड और हैव अपडेटेड में ये दोनों कम्युनिटी क्या हो गई, कैसे डिवाइड हो गई है। तो इन्होंने तो एक नया ब्लॉक माइन किया, अभी इन्होंने कोई भी ब्लॉक माइन नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 0.7 MB ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इनका बिटकॉइन कैश फ्लो क्या कहता है कि अप टू 8 MB तक हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक साइज रखेंगे, और 0.7 MB बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है, कोई भी चेंजेस की जरूरत नहीं है। बस हम ये क्या करेंगे, ये वाली कम्युनिटी ने पहले फाइंड किया तो ये 0.7 MB इनके एक तरह से ब्लॉकचेन का पार्ट था, ठीक है। बट जो नेक्स्ट ब्लॉक था जो कि 1 बजे माइन हुआ, वो इस कम्युनिटी ने किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक 7 MB का ब्लॉक यहाँ पे माइन हुआ। अब ये जो 7 MB का ब्लॉक है, डेफिनेटली ये सिर्फ और सिर्फ इस कम्युनिटी का है, क्योंकि इन्होंने ही सिर्फ ब्लॉकचेन के बिट मतलब ब्लॉकचेन की साइज जो कि 8 MB तक एप्लीकेबल हो उसको एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे ये चीज हुई। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी कम्युनिटी हैवंट अपडेटेड वाले, उन्होंने भी अपना ऐसा नहीं कि वो लोग अपना प्रोसेस करेंगे, उन्होंने भी क्या किया उसी टाइम पे एक अपना 0.5 MB का ब्लॉक माइन किया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर एरिया में ही हार्ड फोर्क स्टार्ट हो गया। इस पर्टिकुलर एरिया के बाद अब जो भी यहाँ पे चेंजेस होंगे, यहाँ पे जो भी नए ब्लॉक क्रिएट होंगे, वो क्या होंगे, अलग अलग कम्युनिटी के कहलाए जाएंगे, हैवंट अपडेटेड और हैव अपडेटेड। तो बिटकॉइन क्या जिन्होंने अपडेट कर लिया था 8 MB के लिए, यहाँ पे उनके ब्लॉक चेंज होंगे, और जिन्होंने अपडेट नहीं किया उनके लिए यहाँ पे ब्लॉक चेंज होंगे। तो अब क्या होगा, कुछ इस तरह से पैरेलल वे में अब यहाँ पे ब्लॉक की माइनिंग होगी, ये जो कि देखिए अपनी खुद की ब्लॉकचेन लेके चल रहे हैं, और ये जो कम्युनिटी है ये अपनी खुद की ब्लॉकचेन लेके चल रही है। इनका साइज भी आप देखेंगे तो 7 MB 8 MB 6.5 MB इस तरह की लोग साइज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि ये इस तरह की साइज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बस हाँ फर्क है, ये सिबिट को मान रहे हैं और ये सिबिट को नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा क्या हार्ड फोर्क हुआ। अभी हार्ड फोर्क क्यों, अब इसके बाद आप वापस नहीं जा सकते, राइट, वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अब ये एक अलग तरह की चेन बन गई, ये कोई सेम चेन नहीं है, ये एक अलग ही तरह की चेन बन गई और ये अपने आप ही कंटिन्यू होगी, जबकि ये एक अलग तरह की चेन बन गई और ये अलग कंटिन्यू होगी। तो ये दो पैरेलल चेन्स अब क्या हो रही हैं, एक साथ वर्क कर रही है। तो इसी को क्या कहा जाता है, हार्ड फोर्क कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडी चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है सॉफ्ट फोर्क। तो ये शुरू करते हैं। तो सॉफ्ट फोर्क समझने के लिए पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे, ताकि हमें बाद में सॉफ्ट फोर्क समझने में ज्यादा आसानी हो, फिर हम प्रैक्टिकली उसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो सॉफ्ट फोर्क की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानने वाली है कि सॉफ्ट फोर्क जो होता है वो आपके प्रोटोकॉल में चेंजेस लाता है। जी हां, ये भी आपके प्रोटोकॉल में चेंजेस लाता है, मगर जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। इसका क्या मतलब है, अगर आपने मेरा हार्ड फोर्क वाला वीडियो नहीं देखा तो वहां से देख लीजिएगा, वहां पे मैंने बताया था कि हार्ड फोर्क किस तरह से क्या होता है। तो वहां पे हमने देखा था कि किस तरह से हार्ड फोर्क की वजह से हमारी जो इथेरियम की ब्लॉकचेन थी वो दो सेपरेट ब्लॉकचेन्स में डिवाइड हो गई थी, एक इथेरियम क्लासिक और एक इथेरियम का न्यू वर्जन। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारी जो ओरिजिनल इथेरियम की ब्लॉकचेन थी जो यहाँ तक थी वो कुछ और थी, जबकि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो दो पार्ट्स में कुछ नए वर्जन में डिवाइड हो गई। नए वर्जन में डिवाइड होने का मतलब है एक इथेरियम क्लासिक डेफिनेटली इनकी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनी, इसकी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी बनी, तो मतलब ये दो सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दो सेपरेट ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। जबकि सॉफ्ट फोर्क में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो वहां पे आप देख भी लेंगे। उसके अलावा हम बात करें तो सॉफ्ट फोर्क बैकवर्ड कंपैटिबल होता है। बैकवर्ड कंपैटिबल का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो अपडेटेड नोड होती है वो अभी भी नॉन अपडेटेड वन से कम्युनिकेट करती है। काफी अजीब सी बात है, राइट, तो समझ में नहीं आया मैंने कहा। तो इसका ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाता हूं। लेट्स से आप हार्ड फोर्क अगर समझिए, हार्ड फोर्क कुछ और नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह है। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब इसका मतलब ये है कि लेट्स से कोई पॉलिटिकल पार्टी ए है, ठीक है। तो क्या होता है कभी पॉलिटिकल पार्टी में बीच में आपस में चल जाते हैं, कुछ मतभेद हो जाते हैं। मतभेद का मतलब है कि आपस में कुछ लड़ाई हो जाती है उनके मेंबर्स के बीच में, क्योंकि उनके जो व्यू पॉइंट्स होते हैं काफी अलग हो जाते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। वैसे हमारी जो ए पॉलिटिकल पार्टी थी वो A1 और A2 में डिवाइड हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि A1 के अपने व्यू पॉइंट्स थे और A2 के अपने व्यू पॉइंट्स थे, मगर वो दोनों ही ए पार्टी से ही क्या हुई थी, निकली थी, ठीक है। तो यहाँ पे A1 और A2 में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि A1 A2 एक दूसरे की तरह से कॉम्पिटिटर बन गई, राइट। इस तरह के आपने कई सारे केसेस देखे होंगे आई बिलीव। मगर जब हम बात करते हैं सॉफ्ट फोर्क की, तो सॉफ्ट फोर्क इस तरह से नहीं होता। सॉफ्ट फोर्क में क्या है कि इस जस्ट लाइक कि आपने कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और आपके एप्लीकेशन में कोई अपडेट आ गया, कोई लेटेस्ट वर्जन आ गया, जैसे आपको गेम की एप्लीकेशन, ठीक है, अब आप गेम की एप्लीकेशन में आपको कोई लेटेस्ट वर्जन आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो गेम की एप्लीकेशन थी वो पूरी बंद हो जाएगी, नहीं, वो क्या करेगी कि आप इसको अपडेट कर लीजिए ताकि आप अपने नए फीचर्स को अवेल कर सकिए। जैसे अगर आप गन वाला गेम खेलते हैं तो उसमें नई गन्स अवेल कर सकें, इस तरह के, ठीक है। मगर अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं करेंगे, आप वही पुरानी अपनी एप्लीकेशन को चलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप फिर जो लेटेस्ट फीचर्स हैं उस एप्लीकेशन के उसको क्या नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। और होगा क्या, जब आप अपने फ्रेंड्स को देखेंगे कि ओके मेरे फ्रेंड्स जो है ना वो तो लेटेस्ट एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और उनके पास नई गन्स भी आ रही है, मतलब गेम वाला गेम में मान लो, या फिर कोई कुछ नई टेक्नोलॉजी में फीचर्स आ गए जो मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो एट द एंड आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना ही पड़ेगा। तो यही है सॉफ्ट फोर्क। तो सॉफ्ट फोर्क में क्या होता है कि जो नोड्स होती हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन जो पहले था वो अभी भी रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वो आपस में भी बात करती हैं। जैसे अगर अपडेटेड नोड्स कुछ जैसे कोई ब्लॉक आता है तो वो ब्लॉक को दोनों लोग ही क्या करती हैं, वैलिडेट करती हैं, सारी चीजें करती हैं जैसे पहले चला था, उनमें कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, डिफरेंट ब्रांचिंग डिवाइड नहीं होता। ये एग्जांपल से और चीज समझ आएगी। आई थिंक ये वाला एग्जांपल से समझ आएगा कि सॉफ्ट फोर्क इज जस्ट लाइक एन अपग्रेड, वेयर जो आपकी एप्लीकेशन है वो अभी भी वैसी बनी रहती है, जबकि आपको जो हार्ड फोर्क है उसमें क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी की तरह जहां पे दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में वो डिवाइड होता है, तो वो हमारा हार्ड फोर्क है। अब बात करें ओल्ड नोट्स जो हमारे ग्रेड नोट्स नहीं है, कुड स्टिल वैलिडेट ब्लॉक्स एंड ट्रांजैक्शन बट दे जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड। यही चीज मैं कह रहा था, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी भी जो ओल्ड नोट्स हैं जिन्होंने अभी अपने आप अपग्रेड नहीं किया है वो अभी भी वैलिडेट कर सकती हैं ब्लॉक्स को, ट्रांजैक्शन को, बट डिफरेंट ये चीज है कि वो समझ नहीं सकती। अब इसका भी क्या मतलब है, हम लोग अपने एग्जांपल में चलते हैं तो सारे डाउट्स आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखते हैं किस तरह से प्रैक्टिकली सॉफ्ट वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में दो ग्रुप डिवाइड हो गए। एक ग्रुप जिसमें 95% की पॉपुलेशन की मेजॉरिटी ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली, और एक ग्रुप जिसमें 5% की पॉपुलेशन है। तो इन ग्रुप का कहना है कि हम लोग अपने एक चीज और, इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है, इनका कहना है कि अब हम लोग जो भी ब्लॉक एक्सेस करेंगे वो उसका साइज सिर्फ 0.5 MB तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया उनका कहना है कि हां अभी भी साइज को अप टू 1 MB रखेंगे, मतलब कि 1 MB रखने का मतलब 0.5 से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने अभी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, ठीक। तो होता क्या है कि ये दो कम्युनिटीज में डिवाइड होती हैं। लेट्स से क्या होता है कि इन्होंने जो हमारी ये ग्रुप है उन्होंने एक पर्टिकुलर ब्लॉक को क्या कर लिया, माइन कर लिया, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे 0.4 MB तो इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है, दोनों एकदम सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0.4 MB दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है, और मैंने बताया था कि ओल्ड नोड और न्यू नोड में कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, दोनों ही क्या करते हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेट दोनों ही करते हैं। तो 0.4 MB एकदम बढ़िया चीज है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है दोनों ग्रुप के लिए। फिर बाय चांस इन्होंने क्या किया, फिर से इन्होंने पहले एक ब्लॉक माइन कर लिया, ये भी बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत की बात नहीं, 0.5 MB अभी भी दोनों के लिए सूटेबल है। बट अब इसके बाद इन्होंने जो ब्लॉक माइन किया उसकी साइज थी 0.8 MB। अब ये जो ब्लॉक है 0.8 MB ये इनको गवारा नहीं, इन्होंने कहा भाई ये नहीं हो सकता, मतलब 0.8 MB तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपने आप को अपडेट कर लिया और अब हम सिर्फ 0.5 MB की बात करेंगे। तो ये बात होगी इनके लिए दिक्कत वाली। अब क्या, ये अपना माइनिंग प्रोसेस भी अपनी तरफ से करती रहेंगे, तो इन्होंने भी एक ब्लॉक माइन किया जो कि 0.3 MB का था, जो कि ओके ये भी बढ़िया ब्लॉक था। अब इसमें प्रॉब्लम वाली बात क्या है, अब प्रॉब्लम वाली बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने अपडेट कर लिया, तो ये क्या कर सकते हैं, इनके पास क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है 95% की, तो इनके पास चांसेस ज्यादा है कि ये ज्यादा ब्लॉक मतलब माइन कर सकते हैं इनके थ्रू, इनसे ज्यादा। तो इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट फिर से एक पर्टिकुलर ब्लॉक क्या कर लिया, माइन कर लिया, क्योंकि इनके पास पॉपुलेशन ज्यादा थी, मतलब एक पॉपुलेशन से 95% मेजॉरिटी थी, तो इनके पास हैशिंग पावर हम अज्यूम करेंगे ज्यादा है, तो इसलिए उन्होंने फिर से एक पर्टिकुलर ब्लॉक 0.4 MB का माइन कर लिया। जब ये वाली कम्युनिटी ने देखा कि अरे इन्होंने तो एक 0.3 भी माइन किया, 0.4 भी माइन किया, क्योंकि इन दोनों के बीच अभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ, मैंने पहले इसको इसलिए आपको दिखा दिया साइड में, इन दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ, ओल्ड नोड और न्यू नोड में। तो ये कहेंगे भाई ये तो बड़ी बड़ी बात है, क्योंकि अगर इन लोगों ने इसी चेन को अपना माना हुआ है तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो करते हैं। अगर आपने मेरा कंसेंसस एल्गोरिथम वाला वीडियो नहीं देखा है ब्लॉकचेन का तो जरूर से देख लीजिए, वहां पे मैंने चीज डिस्कस की है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनको ये वाला ब्लॉक क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब ये वाला ब्लॉक क्योंकि इनको रिजेक्ट करना पड़ा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये मे भी आपको लगा होगा कि इसके बाद क्या हो रहा है, हार्ड फोर्क शुरू है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इनको ये वाला ब्लॉक ही रिजेक्ट करना पड़ा, तो यहाँ पे हार्ड फोर्क नहीं होगा, होगा क्या कि अब ये दोनों एक साथ ही काम करेंगे। कैसे होगा, तो नेक्स्ट क्या होता है कि फिर से हमने अपडेट वाले ने कोई पर्टिकुलर ब्लॉक फाइंड किया जो कि 0.5 MB का था, और ठीक इसी तरह से नेक्स्ट हो सकता है अब इन्होंने कोई पर्टिकुलर ब्लॉक फाइंड किया जो कि 0.3 MB का था। मतलब कि अगर फ्यूचर में भी अगर कुछ 0.8 या 0.9 चीज करते हैं तो एट द
द एंड उसको क्या करना पड़ेगा, ऑर्फन ब्लॉक घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो लॉन्गेस्ट चेन रूल लगाएंगे तो वो देखेंगे कि उनकी जो कम्युनिटी है, ऑल ओवर कम्युनिटी है, वो क्या कर रही है, इस पर्टिकुलर मतलब ऐसे ब्लॉक को फॉलो कर रही है जो कि 0.5 MB से कम के हैं। तो इसीलिए उनको बार-बार क्या करना पड़ेगा, इसमें बड़े-बड़े ब्लॉक्स को क्या करना पड़ेगा, एक तरह से हटाना पड़ेगा, और एट द एंड इनको भी क्या करना पड़ेगा, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी चेन में स्प्लिटिंग नहीं हुई है, ये चेन यहाँ से चलती आ रही है, वापस से ये पूरी यहाँ से कंटिन्यूअसली चली, कोई भी दो ब्रांचेस यहाँ पे डिवाइड नहीं हुई है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्या हुआ है। मैं एक बार फिर से एक बार आपको समराइज कर दे रहा हूँ। हुआ क्या कि हमारी ये दो कम्युनिटीज थी, अब इन दोनों कम्युनिटीज में हुआ कि इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, इन्होंने अपडेट करके किया कि 0.5 MB तक का ही ब्लॉक में एक्सेप्ट करेंगे, उन्होंने 1 MB तक का ही करेंगे। फिर उन्होंने माइंड किया ब्लॉक 0.5 MB का, ठीक है, दोनों के लिए एक्सेप्टेबल था। फिर उन्होंने 0.5 MB का किया, ओके, अब इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं, इनके लिए एक्सेप्टेबल है, तुमने ठीक करते रहो, इन्होंने कहा ठीक लो करते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इन्होंने अपना खुद ही ब्लॉक माइन किया, फिर उन्होंने एक और ब्लॉक माइन कर दिया। अब इसकी वजह से इनको लगा कि ये हमारे नेटवर्क में, जो ओवर नेटवर्क में क्या हो रहा है, ये वाली चेन लंबी चल रही है और हम लोग इनसे थोड़ा पीछे हैं, रीजन भी क्योंकि पास हैशिंग पावर इनसे ज्यादा है। क्यों ऐसा, क्योंकि भाई ये 95% की पॉपुलेशन रखी हुई है। तो एट द एंड इन सारी मेजॉरिटी जो ये भी कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इनको भी इसी ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और जब ये प्रोसेस बार-बार होगा, जब ये चीज करने की कोशिश करेंगे 0.8 0.9 या 1 MB का, ये वाला कोशिश करेगा माइन करने की, बार-बार उसको रिजेक्शन झेलना पड़ेगा क्योंकि 95% यहाँ पे बिलोंग करती है। तो इसीलिए एट द एंड इसको भी क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा हैवंट अपडेटेड, मतलब उनको अपग्रेड करना पड़ेगा एट द एंड। अब ये क्या है कि माइन चल रही है, आराम से चाहिए अलग करे, चाहिए अलग करे, कोई फर्क की बात नहीं, क्योंकि एट द एंड इसको क्या करना पड़ेगा, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। तो यही चीज है सॉफ्टवेयर। आपको आई थिंक यहाँ से ये सारी लाइंस का भी मतलब समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया। ओल्ड नोड्स कुड स्टिल वैलिडेट ब्लॉक एंड ट्रांजैक्शन, अभी भी उन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ, कोई ब्रांच में कोई भी ब्रांच स्प्लिट नहीं हुई। यहाँ पे मैंने बताया था अपडेटेड स्टिल कम्युनिकेट नॉन अपडेटेड वंस, और यही चीज वहाँ पे चल रही थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक, इसका नाम है आईसीओ। तो आइए शुरू करते हैं। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। This guy says that he would answer all your questions, but then he doesn't really. I asked him that I am a front-end developer. I'm thinking if I should be. I am studying blockchain right now, but what that is doing, it is taking a toll on. I could have upgraded myself on front end itself, right? There is so much to explore in front end. You can master the architecture of front end, become a solution provider of front end. But then, so what should I be doing? Should I keep on exploring blockchain, or should I stick to front end, just front end, and increase my skill over there? I can do both at the same time, but obviously that would decrease my pace, right? This guy just told me to go and check out roadmap of uh, a blockchain roadmap. Now, how is a blockchain roadmap is supposed to help? I have a blockchain roadmap. The one he's talking about says it is sticking in my cupboard, the door of my cupboard. So it is. Oh, what sort of English I've been speaking? I have like it is pasted there, so I can see that. That is not helpful. In I asked him a different question, and he being an experienced guy, I thought he would have a one sentence answer. I was expecting like do whatever you want to do, something like that. But then, yeah, disappointing. तो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जस्ट लाइक आईपीओ ही होता है, बट यहाँ पे आईपीओ और आईसीओ में कुछ डिफरेंस होते हैं, और उसी डिफरेंस को हम लोग अब बात करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो आइए पहले समझते हैं कि आईपीओ क्या होता है। तो आईपीओ में जैसे ये हमारे जेफ बेजोस हैं, ठीक है, हमारे अमेज़न के फाउंडर, इन्होंने जब कंपनी स्टार्ट की होगी तो इन्होंने क्या किया होगा, कुछ ना कुछ अपना इनिशियल कैपिटल लगाया होगा, कुछ मतलब पैसा लगाया होगा, उसके थ्रू इन्होंने अपने अमेज़न को क्रिएट किया होगा, राइट। और जब उन्होंने अमेज़न क्रिएट किया होगा तो इसके बदले में उन्हें क्या मिला, इसके बदले में उन्हें मिलेंगे अमेज़न के शेयर्स, कि भाई मैंने कुछ पैसे लगाए और उसके बदले उन्होंने क्या किया, कुछ शेयर्स खरीदे अमेज़न के। और अब अमेज़न क्या करेगी, अमेज़न क्या करेगी, अब सर्विस और प्रोडक्ट्स बनाएगी, जैसे कि इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया था और अमेज़न की अपनी वेबसाइट है, तो इस तरह की क्या करती है अमेज़न प्रोडक्ट्स बनाती है। ये हमारा क्या है, ये हमारी एलेक्सा है जो कि अमेज़न ने बनाया है। अब जब वो ये सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसको कस्टमर खरीदते हैं, जिसके लिए उनको क्या मिलता है, प्रॉफिट, मतलब कि उनको इस चीज के लिए मिलता है प्रॉफिट। मतलब ये चीज जो चल रही है अभी तक हम लोगों ने इसमें कोई भी आईपीओ वाली बात नहीं, अभी ये सिंपल एक मॉडल है। बट अब जो हमारे जेफ बेजोस हैं उनका कहना है कि अब हमें थोड़ा ना क्या थोड़ा और पैसे की जरूरत है ताकि अपने बिजनेस को और बड़ा कर सके, और इसके लिए वो क्या करते हैं, आईपीओ निकालते हैं, हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसमें क्या होता है कि पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है। पब्लिक क्या करती है, कुछ कैश देती है अमेज़न के मतलब आईपीओ के लिए, कहती है ठीक है हम आपको कैश देने को तैयार हैं, बट इसके बदले में पब्लिक को मिलता क्या है, इसके बदले में पब्लिक को मिलते हैं शेयर्स इस कंपनी के। तो शेयर्स मिलने से क्या होता है कि जो भी कंपनी का कोई भी प्रॉफिट होता है तो जो हमारी ये इनको एक तरह से इन्वेस्टर्स कह सकते हैं, इनको भी वो प्रॉफिट में कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से शेयर खरीद रहे हैं कंपनी को। जितने ज्यादा इनके पास शेयर होंगे वही कंट्रोल कर पाते हैं उतनी ज्यादा कंपनी को। तो अगर ये हैं तो उन्होंने बहुत सारे शेयर ऐसे खरीदे कि लेट्स से उनके पास 51% के शेयर्स हैं, तब क्या होगा, अमेज़न इनके कंट्रोल में आ गई, कुछ इस तरह से समझ लीजिए। तो ये बेसिकली एक आईपीओ का मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि किस तरह से एक आईपीओ वर्क करता है। अब आईसीओ के केस में क्या होता है, लेट्स से ठीक है, आईसीओ में भी पहली चीज तो ये सारी चीजें तो हैं जो नॉर्मल है, मतलब इस तरह से जब आईसीओ आपने नहीं बनाया, कंपनी है लेट्स से अमेज़न ही है, उसने क्या किया, अपनी एक सिंपली प्राइवेट कंपनी बनाई जिसके थ्रू क्या करते हैं इनिशियल कैपिटल, और मतलब सब कुछ वैसे ही है जैसे आईपीओ लॉन्च करने से पहले होता है, तो सब कुछ इस तरह से चल रहा था। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जब पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो क्या करती है, वो अमेज़न के शेयर्स नहीं खरीदती, अब वो क्या करती है, अमेज़न से टोकन्स खरीदती है। अब वो टोकन्स क्यों खरीदती है, टोकन्स है कि मैंने इसके लिए पूरा लेक्चर कवर किया है, बिटकॉइन, जब मैंने बिटकॉइन वर्सेस ब्लॉकचेन बताया था, आपने वो नहीं देखा तो आई बटन में वीडियो देख लीजिएगा। तो टोकन्स के लिए बेसिकली आईपीओस होते हैं ज्यादा, सॉरी आईसीओस होते हैं ज्यादातर। तो होता क्या है कि भाई ये जो हमारे जब नहीं एग्जाम लोग आईपीओ निकालेंगे, आईसीओ निकालेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है अब अगर आप अभी हमसे क्या है कुछ टोकन्स ले लेते हो, ठीक है, कुछ आप हमसे अगर आज कुछ टोकन्स लेते हो तो कल क्या होगा, उस टोकन से आप जो अमेज़न की प्रोडक्ट है ना बड़ी सस्ते में खरीद पाओगे। डेफिनेटली आप कल भी कैश में खरीद सकते हो, पर तब भी आप अगर टोकन से खरीदते हो ना तो थोड़ा ज्यादा सस्ता मिलेगा, जस्ट लाइक कि एक वाउचर समझ लीजिए। तो कहते हैं अगर आप हमसे टोकन खरीद लो आज तो आपको सस्ते में एक तरह से टोकन भी दे रहे हैं, और कल आप उस टोकन के थ्रू अमेज़न की कोई भी प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते में खरीद पाओगे। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, इस जो प्रोडक्ट है इसके लिए क्या करती है, कैश बिटकॉइन या फिर ईथर के टर्म्स में क्या करती है, अमेज़न को मतलब पे करती है, और इसके बदले इनको मिलते हैं टोकन्स इस पर्टिकुलर सर्विस या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब इस टोकन से यूज करके वो कभी भी इन द फ्यूचर या तो इन टोकन को बेच के और प्रॉफिट कमाती है, जो आज हो रहा है। अगर आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी की मतलब कई सारी इन्वेस्टमेंट इसी तरह से कि आप खरीदते हैं उसको बेचते ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप टोकन को रख सकते हैं और इससे अमेज़न की प्रोडक्ट बाद में खरीद सकते हैं।
अब यहाँ पे आईसीओ और आईपीओ में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, पहला डिफरेंस तो ये कि आईपीओ में बहुत ज़्यादा लीगल वर्क होता है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारी लॉस को फॉलो करना होता है और दो थिंग्स होती हैं। मगर आईसीओ में ऐसा नहीं होता है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो एक इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो पब्लिक है, इसके पास कोई कंट्रोल नहीं होता कंपनी के ऊपर। जैसे वहाँ पे क्या होता था कि वो शेयर्स करती थी तो कंपनी पे पूरा उनका कंट्रोल होता था, मगर यहाँ पे अमेज़न के जो जेफ बेज़ोस हैं उन्होंने कहा मैं आपको कंट्रोल नहीं दूँगा, सिर्फ और सिर्फ आप टोकन्स ले लीजिए और इसके थ्रू आप बस इससे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, मगर कंट्रोल अभी भी जेफ बेज़ोस जी के पास है। तो ये बेसिकली है आईसीओ। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि आईपीओ और आईसीओ में डिफरेंस क्या है। आईपीओ आईसीओ में सिंपल सिंपल डिफरेंस ये है कि पहली चीज़ और डेफिनेटली ये एक ब्रॉडर में डिफरेंस है, अगर आपको थोड़ा और रिसर्च कर सकते हैं, मैंने ऊपर से आपको बता दिया कि क्या होता है आईपीओ। यहाँ पे टोकन से डील करता है, जबकि वहाँ पे शेयर्स में डील करता है। यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पे आपके पास कंट्रोल होता है। इसमें लीगल वर्क कम की जरूरत है, वहाँ पे लीगल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। और एक आईसीओ के बारे में बात भी की हुई, अगर आपको याद हो तो डाउ अटैक में हमने आईसीओ के बारे में बात की थी, राइट? तो वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इसका नाम है एथेरियम 2.0, जिसको हम लोग सेरेनिटी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है एथेरियम 2.0। तो एथेरियम 2.0 नाम से ही काफी पता चल रहा है कि 2.0 मतलब कि इसके जो पहले वाला ईथर था वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, या फिर वो एथेरियम मॉडल इतना अच्छा नहीं था, तभी हमें क्या वो वर्जन 2.0 की जरूरत पड़ी, राइट? तो ये देखिए क्या है एथेरियम 2.0 में ऐसा जो कि इसको बेटर बनाता है अपने ओल्डर वर्जन से। तो पहली चीज है ये है स्केलेबल, ये स्केलेबिलिटी को फॉलो करता है। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अब क्या होगा, जैसे कि हमारा जो नेटवर्क था उसमें कुछ मतलब पर्टिकुलर नोड्स हैं, कुछ सेलेक्टेड नंबर ऑफ नोड्स हैं, ज्यादा नोड्स नहीं है, मगर जब हम एथेरियम 2.0 को अडॉप्ट करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर पाएंगे, नोड्स को अटैच कर पाएंगे। इसीलिए ये क्या है, काफी ज्यादा स्केलेबल है। और साथ ही साथ अगर ये स्केलेबल है तो आप समझ लोगे कि ज्यादा नोड्स अटैच होने पे हमारे पास क्या होंगे, ज्यादा लोग होंगे जो वैलिडेशन वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एथेरियम 2.0 काफी अच्छा है, और भी कई रीजन की वजह से भी सिक्योरिटी इंक्रीज होती है, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सस्टेनेबल, ये ज्यादा सस्टेनेबल है एज कंपेयर टू जो प्रीवियस हमारे मॉडल थे एथेरियम के, या फिर हम बात करें हमारे जो प्रीवियस ब्लॉकचेन के मॉडल थे उनसे ज्यादा ये सस्टेनेबल है। पहली चीज तो इसमें एनर्जी कंजम्पशन लो है, और दूसरी चीज ये आने वाली नीड जो है उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है, वो भी सस्टेनेबल है। और ये कैसे करता है अभी आपको सबको समझ में आ जाएगा, जैसे ही मैं आपको एग्जांपल के समझाऊंगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब बात करते हैं एथेरियम 2 में जो आ रहा है, एथेरियम 2 में मेजर अपडेट्स करते हैं, क्योंकि एथेरियम 2.0 आ गया मतलब इसमें ये चीजें हैं, मगर एथेरियम 2 में ऐसी क्या चीजें हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज होने वाली है, ठीक है? तो हम कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला अपडेट है वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। जी हाँ, ये तो आपने आई थिंक नाम भी सुना होगा, काफी ज्यादा समय चर्चा में है। एलन मस्क ने भी हर जगह मतलब ट्विटर पे पूरी तरह से बता दिया कि प्रूफ ऑफ स्टेक ज्यादा अच्छा है एथेरियम इस वजह से, और प्रूफ ऑफ स्टेक की वजह से ही एथेरियम जो है काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, एक तरह से समझ सकते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक आने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, ऐसा अपग्रेड होगा जो कि एथेरियम को बहुत ज्यादा सस्टेनेबल, स्केलेबल और जैसे मैंने बताया सिक्योर बना देगा। और जो दूसरा अपडेट है जिसकी वजह से एथेरियम 2.0 बहुत अच्छा होने वाला है वो है शार्डिंग, जिसे हम लोग कहते हैं शार्डिंग। अब शार्डिंग क्या है, ये इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अपने प्रूफ ऑफ स्टेक की, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि शार्डिंग क्या होती है और किस तरह से शार्डिंग की वजह से भी एथेरियम 2.0 ज्यादा अच्छा है हमारे पुराने एथेरियम के वर्जन से। तो ये बात करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक की। तो प्रूफ ऑफ स्टेक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि प्रूफ ऑफ स्टेक में हमारे माइनर्स नहीं होते। जी हाँ, यहाँ पे जो होते हैं उनको कहते हैं वैलिडेटर्स। जी हाँ, इन्हें कहा जाता है वैलिडेटर्स, ना कि माइनर्स। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बात करनी चाहिए, जैसे मैंने जब बात की थी प्रूफ ऑफ वर्क की, तो मैंने बताया था कि क्यों उसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं, क्या डेफिनेशन है वहां वर्क की, राइट? ठीक इसी तरह से जब इसे प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जा रहा है तो उसके पीछे भी एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि जब भी किसी पर्सन को वैलिडेटर बनना होता है, जिसको अगर हम लोग बात करें बिटकॉइन की टर्म या पुरानी एथेरियम वर्जन एथेरियम की मॉडल की, इसको हम कह सकते हैं माइनर बनना Just testing the audio. Just testing the audio. Audio test, audio test, audio test, audio test, audio test. Audio test, audio test, audio test, audio test, audio test. So I can hardly anything hear anything that I say. I'll make get this to full now. How is the audio? How is the audio now? Get this to full now. How is the audio? How is the audio now? How is the audio? Am I still audible? How is the audio now? No, I still can hardly hear anything. I'll increase this. Hello? Still can hardly hear anything. I'll increase this. Hello? Am I still audible? Am I still audible? Yeah, it seems like I'm audible. Yeah, it seems like I'm audible. I think this works, right? So this. I think this works, right? So this. This is a compromise between my comfort and the video quality. So there would be some noise because of my fan working. Between my comfort and the video quality. So there would be some noise because of my fan working. But at least I'm comfortable, so I'll get to stay here for long and watch more of the content. But at least I'm comfortable, so I'll get to stay here for long and watch more of the content. But at least I'm comfortable, so I'll get to stay here for long and watch more.
होता है, उसके लिए क्या करना, वैलिडेटर बनना होता है। ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, ऐसा अपग्रेड होगा जो ईथर को बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल, स्केलेबल और जैसे मैंने बताया सिक्योर बना देगा। और जो दूसरा अपग्रेड है जिसकी वजह से ईथर 2.0 बहुत अच्छा होने वाला है वो है शार्डिंग, जिसे हम लोग कहते हैं शार्डिंग। अब शार्डिंग क्या है, ये इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अपने प्रूफ ऑफ स्टेक की, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि शार्डिंग क्या होती है, किस तरह से शार्डिंग की वजह से भी इथेरियम 2.0 ज़्यादा अच्छा है हमारे पुराने इथेरियम के वर्जन से। तो ये बात करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक की। तो प्रूफ ऑफ स्टेक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि प्रूफ ऑफ स्टेक में हमारे माइनर्स नहीं होते। जी हाँ, यहाँ पे जो होते हैं उनको कहते हैं वैलिडेटर्स। जी हाँ, इन्हें कहा जाता है वैलिडेटर्स, ना कि माइनर्स। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें मैं बात करनी चाहिए, जैसे मैंने जब बात की थी प्रूफ ऑफ वर्क की, तो मैंने बताया था कि क्यों उसे प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं, क्या डेफिनेशन है वहां वर्क की, राइट। ठीक इसी तरह से जब से प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जा रहा है तो उसके पीछे भी एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि जब भी किसी पर्सन को वैलिडेटर बनना होता है, जिसको अगर हम लोग बात करें बिटकॉइन की टर्म या पुरानी इथेरियम की मॉडल की, जिसको हम कह सकते हैं माइनर बनना होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस पर्सन को कुछ ईथर अपने स्टेक पे लगाने होते हैं। जी हाँ, अभी स्टेक पे लगाने का क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा। लेट्स से ये जो हमारे पर्सन है इनको क्या बनना है, वैलिडेटर बनना है, और इनको अगर वैलिडेटर बनना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ ईथर अपने वॉलेट से निकालने होंगे और देने होंगे सिस्टम को। तो ये कैसे समझ सकते हैं, सिस्टम मतलब एक लॉकर है जहां पे इन्होंने क्या कहा कि ये लो मेरे ईथर, इसे तुम रख लो। अब ये ईथर कितना होता है, मिनिमम 32 ईटीएस की रिक्वायरमेंट होती है एक वैलिडेटर बनने के लिए। अगर आपको मतलब वैलिडेटर बनना है तो उस वैलिडेटर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ मिनिमम 32 ईटीएस क्या होंगे, सिस्टम को देने होंगे। ठीक है, मुझे वैलिडेटर बनना है तो ये 32 ईटीएस रख लो और मुझे वैलिडेटर बना दो। क्योंकि इन पर्सन ने क्या किया, इन्होंने वैलिडेटर बनना तो इन्होंने 32 ईटीएस दे दी सिस्टम को, सिस्टम का ठीक है, अब आप एक वैलिडेटर बन गए। ठीक है, अब क्या होगा, इन्होंने जब ये अपने 32 ईटीएस सिस्टम को दे दिया, अब सिस्टम कहेगा ठीक है, आपका जो काम है वो करो, मतलब कि ब्लॉक्स को अटैच करना शुरू करो। और जब हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक की तो ब्लॉक के अटैचमेंट को कहा जाता है अटेस्टेशन। जी हां, इसको कहा जाता है अटेस्टेशन, मतलब एक तरह से अटेस्ट करो ब्लॉक को। तो इनको ये काम दे दिया गया। अगर ये काम, ये जो वैलिडेटर है ये सही तरीके से करते हैं, तब तो क्या होता है कि इनको इनका ईथर वापस कर दिया जाता है, मतलब जो भी लॉकर में इन्होंने ईथर जमा किया था इनको इनका ईथर वापस कर दिया जाता है। प्लस इनको जो ट्रांजैक्शन फी होती है ब्लॉक को अटैच करने की वो भी इनको दे दी जाती है। मतलब अगर आपने अच्छे से काम किया तो आपने जो ईथर दिया था हमको लॉकर में रखने के लिए वो आपको वापस कर दिया गया, साथ ही साथ आपको जो ट्रांजैक्शन फी है वो भी वापस कर दी जाएगी। मतलब ट्रांजैक्शन फी जो आपने ब्लॉक को एक तरह से अटैच किया है, जो टेस्ट किया है, उसके लिए आपको उसकी ट्रांजैक्शन फी मिल जाएगी। मतलब ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। बट अगर इन वैलिडेटर साहब ने कुछ गड़बड़ी करी, कुछ मैलिशियस एक्टिविटी की, कुछ इस तरह की चीज करने की कोशिश की, वजह से कुछ मैलिशियस ब्लॉक अटैच करने की मान लीजिए कोशिश करी, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जो इन्होंने ईथर दिया था वो भी इनको नहीं मिलेगा, और चांसेस है कि जो इनको ट्रांजैक्शन फी मिली थी वो भी इनको नहीं मिलेगी। तो आई होप आपको समझ आएगा कि स्टेक का मतलब क्या है। स्टेक का मतलब है कि इन्होंने जो अपने ईथर था वो क्या कर दिया, एक तरह से कहा कि ठीक है, ये ईथर मेरा एक तरह से गिरवी रख लो। ठीक है, ये गिरवी रख लो एक तरह से। अगर मैंने अपना काम सही से किया तो मेरा ईथर मुझे वापस कर देना, और जो मैंने काम किया उसके लिए मुझे ट्रांजैक्शन फी दे देना। मगर अगर मैंने अपना काम सही से नहीं किया तो मेरा ईथर मुझे मत देना, और अगर मेरा ट्रांजैक्शन फी भी मुझे मत देना। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जाता है। यही है कॉन्सेप्ट प्रूफ ऑफ स्टेक। आपको कुछ पर्टिकुलर ईथर अपने वॉलेट से देना होता है सिस्टम को, सिस्टम फिर आपको वैलिडेटर बना देता है, और मिनिमम 32 ईटीएस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप सही से काम करते हो, सही से ब्लॉक को टेस्ट करते हो, तो आपको अपनी ट्रांजैक्शन फी और साथ ही साथ आपको अपना ईथर वापस कर दिया जाता है। पर अगर आप ये चीज नहीं करते हो तो आपकी ना ट्रांजैक्शन फी नहीं मिलती है और ना ही आपको अपना ईथर वापस किया जाता है। तो इस तरह से आप अपना ईथर जो है स्टेक रखते हो, आप गिरवी रखते हो, और फिर चांसेस है तभी मिलेंगे जब आप अपना काम सही से करते हो। तो इसीलिए इसे प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जाता है। अब किस तरह से ये वर्क करता है, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ वर्क की तरह बिल्कुल नहीं वर्क करता। यहाँ मान लेते हैं कि हमारी ये इथेरियम की ब्लॉकचेन है, यहाँ हमारे डिफरेंट डिफरेंट वैलिडेटर्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट वैलिडेटर्स हैं। अब अगर ब्लॉक को अटैच करना है तो हमारे प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, कंपटीशन होता है। कंपटीशन कैसा कि भाई जो जल्दी माइन करेगा, जो जल्दी माइन करेगा वही क्या होगा, विजेता होगा, वही विनर होगा हमारा, है ना। मगर इस पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो सिस्टम है वो सेलेक्ट करता है इनमें से किसी एक पर्टिकुलर वैलिडेटर को, इनमें से किसी एक पर्टिकुलर नोड को। हो सकता है वो ए हो सकता है कि वो ई हो, और हो सकता है कि वो बी हो। मतलब कि इनमें से वो कोई भी हो सकता है। ये पूरा रैंडम प्रोसेस है। तो यहाँ कोई कंपटीशन जैसी चीज नहीं कि हम कॉम्पीट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर मतलब माइन प्रोसेस के लिए, कोई कंपटीशन प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं। यहाँ पे आपको सिस्टम ही सेलेक्ट करेगा, वो सेलेक्ट करेगा कि भाई किसको वैलिडेटर बनाया जाए, और ये पूरा पूरा रैंडम प्रोसेस है। मगर रैंडमनेस में भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई क्या चांसेस है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट, लेट्स से मान लेते हैं कि ए ई बी है यहाँ पे, ठीक है। अब ए ई बी में अगर मैं कहूँ ठीक है ए ई बी है तो ए बी में रैंडम प्रोसेस से सिलेक्शन होगा, ठीक है, ये बात तो समझ आती है। बट क्या अगर चाहता है कि नहीं मुझे जल्दी सेलेक्ट किया जाए, मैं रैंडमली सिलेक्शन हो, बट मुझे चांसेस मेरे बढ़ जाए सेलेक्ट होने के, तो इस केस में क्या होगा, जो सबसे ज्यादा ईथर डोनेट करेगा, जो सबसे ज्यादा ईथर स्टेक पे लगाएगा अपने, उसको ही ज्यादा चांसेस मिलेंगे। जी हाँ, मतलब कि लेट्स अगर ए ने 10 ईटीएच लगाया, बी ने 20 ईटीएच लगाया, और ई ने 30 ईटीएच लगाया, और एफ और सी ने लेट्स से 40 और 50 ईटीएच लगाया, तो इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे नेटवर्क में सबसे ज्यादा ईटीएच लगाया, सी ने लगाया। तो अगर सी ने सबसे ज्यादा ईटीएच लगाए हैं, और अगर ये रैंडमाइजेशन होता है तो ज्यादातर चांसेस है कि किसको सेलेक्ट किया जाएगा, सी को सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ई सी ने ही सबसे ज्यादा अपने ईथर स्टेक पे लगाए हैं। अगर ई ने लेट्स से 100 ईटीएच लगाए होते तो सीधी सी बात है किसको सेलेक्ट किया था, तब ई को ही सेलेक्ट किया जाता, क्योंकि जितना ज्यादा आप ईथर लगाओगे, जितना ज्यादा आप ईथर स्टेक पे लगाओगे, उतने ही ज्यादा आपके चांसेस होंगे सेलेक्ट करने के। जस्ट लाइक रिस्क एंड रिवॉर्ड, जितना ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क इन द सेंस जितना ज्यादा अपने ईथर को स्टेक लगा के रिस्क लेते हो, ज्यादा ईथर का आपको सिस्टम सेलेक्ट भी उसी तेजी से करता है। तो ये है पूरा प्रोसेस प्रूफ ऑफ स्टेक का। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये चीज मैंने बताई कि द मोर ईथर यू पे द मोर चांसेस ऑफ गेटिंग रैंडमली सिलेक्टेड यू हैव। तो जितना ज्यादा ईथर आप पे करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आप रैंडमली सिलेक्ट हो सिस्टम के द्वारा। अब कुछ डिफरेंसेस देखते हैं प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में, ताकि हमें सब कुछ चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। पहली चीज यहाँ पे इनको माइनस कहा जाता है, जो पर्सन वेरीफाई और वैलिडेट करता है, जबकि यहाँ पे इनको जाता है वैलिडेटर। यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक में इस तरह कोई भी जरूरत नहीं। आप सिंपली अपने मोबाइल लैपटॉप से ही कनेक्ट कर सकते हो और आप वैलिडेटर बन सकते हो, सिंपली डोनेटिंग 32 ईटीएच। इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है कि आप एक पूरी कंट्री को चला लो, छोटी सी कंट्री कि आप रैंडमली सेलेक्ट हो करेगा। जो सबसे ज्यादा ईथर स्टेक पे लगाएगा अपने, उसको ही ज्यादा चांसेस मिलेंगे। जी हाँ, मतलब कि जैसे अगर ए ने 10 ईटीएच लगाया, बी ने 20 ईटीएच लगाया, और ई ने 30 ईटीएच लगाया, और एफ और सी ने जैसे 40 और 50 ईटीएच लगाया, तो इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे नेटवर्क में सबसे ज्यादा ईटीएच लगाया सी ने लगाया। तो अगर सी ने सबसे ज्यादा ईटीएच लगाए हैं, और अगर ये रैंडमाइजेशन होता है, तो ज्यादातर चांसेस है कि किसको सेलेक्ट किया जाएगा, सी को सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ई सी ने ही सबसे ज्यादा अपने ईथर स्टेक पे लगाए हैं। अगर ई ने जैसे 100 ईटीएच लगाए होते तो सीधी सी बात है किसको सेलेक्ट किया जाता, तब ई को ही सेलेक्ट किया जाता, क्योंकि जितना ज्यादा आप ईथर लगाओगे, जितना ज्यादा आप ईथर स्टेक पे लगाओगे, उतने ही ज्यादा आपके चांसेस होंगे सेलेक्ट करने के। जस्ट लाइक रिस्क एंड रिवॉर्ड, जितना ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, रिस्क इन द सेंस जितना ज्यादा अपने ईथर को स्टेक लगा के रिस्क लेते हो, ज्यादा ईथर का आपको सिस्टम सेलेक्ट भी उसी तेजी से करता है। तो ये है पूरा प्रोसेस प्रूफ ऑफ स्टेक का। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये चीज मैंने बताई कि द मोर ईथर यू पे द मोर चांसेस ऑफ गेटिंग रैंडमली सिलेक्टेड यू हैव। तो जितना ज्यादा ईथर आप पे करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आप रैंडमली सेलेक्ट हो सिस्टम के द्वारा। अब कुछ डिफरेंसेस देखते हैं प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में, ताकि हमें सब कुछ चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। पहली चीज यहाँ पे इनको माइनस का जाता है, जो पर्सन वेरीफाई और वैलिडेट करता है, जबकि यहाँ पे इनको कहा जाता है वैलिडेटर। यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक में इस तरह कोई भी जरूरत नहीं। आप सिंपली अपने मोबाइल लैपटॉप से ही कनेक्ट कर सकते हो, आप वैलिडेटर बन सकते हो, सिंपली डोनेटिंग 32 ईटीएच। इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है कि आप एक पूरी कंट्री को चला लो, छोटी सी कंट्री को, मगर इसमें कुछ भी इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ सिंपली अपने मोबाइल लैपटॉप से जुड़ना होता है। द मोर हैशिंग पावर यू हैव द मोर लैप्स यू कैन। ये चीज मैंने बताई थी, जितना ज्यादा आपके पास हैशिंग पावर, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे, एसकी यूज करोगे, आप ही बनोगे हर बार विजेता। मगर इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आप जितने ज्यादा ईथर को स्टेक पे लगाते हो उतने ज्यादा आपके चांसेस होते हैं रैंडमली सेलेक्ट होने के। मैं बात कर रहा हूं रैंडमली, कोई कंपटीशन नहीं है, जरूर आप ज्यादा ईथर लगाओ तो प्रोबेबिलिटी आपकी सिर्फ बढ़ेगी, ज्यादा सेलेक्ट होने की। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 100 ईटीएच लगाया और सिस्टम लेट्स से 50 लगाया तो आपको बार-बार सेलेक्ट करेगा। रैंडमली अगर 10 में से लेट्स से आपको 4 बार चांसेस मिलेंगे और सबको लेट्स से 2 बार चांस मिलेगा। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं।
एट द एंड अटैक इसमें कैसे होता था, जिसके पास 50% 51% हैशिंग पावर होती थी वो अटैक कर सकता था, मतलब वही फिर रूल करता पूरे नेटवर्क पे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, राइट। और इसके केस में क्या होता है कि जो 51% का स्टेक लगाएगा, मतलब समझ लीजिए जो पूरे ऑल ओवर जो जितना ईथर है हमारा ईथर में, अगर हम 50% खरीदते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर जब खर्च करते हैं ईथर खरीदेंगे, उसके बाद जाके हम पूरे सिस्टम में कंट्रोल करेंगे। मगर तब भी एल्गोरिथम में इस तरह के कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जहां पे अगर आप 50% स्टेक खरीद भी लेते हैं तब भी एल्गोरिथम में वर्क करती है, समझ आती है कुछ गड़बड़ है। वैसे तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर की जरूरत है, ईथर बहुत महंगा है, अगर आप चेक करेंगे इंटरनेट पे, पहली चीज तो ये। पर अगर आप लेट्स से बहुत अमीर इंसान हो, आप जेफ बेजोस हो, कुछ इस तरह के पर्सन हो, आप कुछ कोशिश भी करते हो, तब भी आपको एल्गोरिथम में इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन लगाए गए कि तब भी आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे सिस्टम को। तो ये है खासियत प्रूफ ऑफ स्टेक की, इसलिए प्रूफ ऑफ स्टेक इतना पॉपुलर है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कॉम्पिटिशन की बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे भाई हर एक दूसरे से लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, भाई कौन करेगा पहले, कौन मतलब जल्दी से माइन कर ले वही विनर बनेगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, देखा आपने रैंडम सिलेक्शन है, रैंडमली सबको सिलेक्शन होता है, तो कुछ भी कॉम्पिटिशन जैसी चीज़ यहाँ पे नहीं रह जाती है। तो आज की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो कि है शार्डिंग, तो आइए शुरू करते हैं। तो शार्डिंग समझने से पहले हम लोग बात करेंगे अपने कंसेंसस प्रोटोकॉल की, जो हमने बिटकॉइन की केस में बात की थी, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क थी, राइट। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, 30 मिनट्स में बहुत अच्छा वीडियो किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग इसको फिर से एक बार डिस्कस करेंगे ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअली में जो प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम है, जो There is already sharding in database where data is divided into multiple servers and kept there so that we don't have to keep redundant data in every server, and depending on which part of the data the client is trying to access, the client would be directed to one server or the other. प्रूफ ऑफ वर्क हमारा यूज करते हैं हम लोग अपने कंसेंसस प्रोटोकॉल बिटकॉइन की, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है उसमें कि हमें आज शार्डिंग का यूज करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो आइए पहले देखते हैं अपने कंसेंसस प्रोटोकॉल अपने बिटकॉइन की, जो अभी हम इसे में करंट यूज कर रहे हैं, पुराने वर्जन में यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा लेट्स से एक पूरा ऑल ओवर नेटवर्क है, और जैसे हमें पता है कि ये सब पूरा P2P नेटवर्क है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये डिफरेंट माइनर्स हैं A B C F और सबके पास अपनी अपनी ब्लॉकचेन है। अगर हम कंसेंसस प्रोटोकॉल की बात करें अपने बिटकॉइन की, जो प्रूफ ऑफ वर्क का यूज करता है, उसमें बड़ा ही सिंपल प्रोसेस होता है। सिंपल प्रोसेस क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर माइनर क्या करता है, एक ब्लॉक को माइन करता है। जैसे ही वो पर्टिकुलर ब्लॉक को माइन करता है तो वो इन्फॉर्मेशन देता है जो उससे एसोसिएटेड माइनर्स है, जो उस नेटवर्क में माइनर्स से जुड़े हुए हैं। जब वो माइनर्स ये इन्फॉर्मेशन पाते हैं तो फिर वो इस ब्लॉक को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं भाई ये जो ब्लॉक आप ऐड कर रहे हैं ये सही ब्लॉक है भी कि नहीं, आप कुछ मैलिशियस एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। जब वो अपनी तरफ से वेरीफाई कर लेते हैं, वैलिडेट कर लेते हैं, तब वो क्या करते हैं उसको अपने ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं, और इसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है ऑल ओवर द नेटवर्क हमारी कन्वे हो जाती है। तो इसी तरह से हमारा कंसेंसस प्रोटोकॉल वर्क करता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पहली चीज तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ 5 आपको माइनर्स दिख रहा है, राइट। बट इस तरह से सोचिए कि जो हमारा बिटकॉइन का नेटवर्क है, जो हमारे ब्लॉकचेन का ये नेटवर्क है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स, थाउजेंड्स ऑफ नोड्स हो सकते हैं। अगर थाउजेंड्स ऑफ नोड्स तक ये इन्फॉर्मेशन कैरी आउट की जाएगी तो समझ सकते हैं कि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पहली चीज, राइट। क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क को ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है जो कि दूसरे किसी दूसरी कंट्री में हो सकता है, किसी दूसरी जगह पे हो सकता है, तो डेफिनेटली एक लैग है क्योंकि इन्फॉर्मेशन को पहले तो ट्रैवल करना है, पहली चीज। दूसरी चीज में प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली अगर आप ध्यान से समझिए तो माइनर्स को इस पूरे जो हमारा नेटवर्क है इसमें सिर्फ एक माइनर को क्या मिलता है, ट्रांजैक्शन फी मिलती है, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर ब्लॉक को माइन किया। जबकि जो ये बाकी माइनर्स हैं, पहली चीज तो ये मेहनत कर रहे हैं मगर ये ब्लॉक पहले नहीं मान कर पाए, तो इनका जो उन्होंने ब्लॉक जनरेट किया होगा उसको इनको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज प्रॉब्लम क्या होगी कि अब इनको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को जो इन्हें प्रोड्यूस किया था इसको वेरीफाई और वैलिडेट करना पड़ेगा। मगर माइनर्स को फीस किस चीज मिलती है, माइनर्स को फीस मिलती है माइनिंग की, ना कि वेरीफाइंग और वैलिडेशन की। मगर उनको वेरीफाई वैलिडेट करना पड़ता है क्योंकि वो एक नेटवर्क का पार्ट है, हमारे बिटकॉइन नेटवर्क का पार्ट है, हमारी ब्लॉकचेन का पार्ट है, राइट। तो इससे क्या होता है कि BCEF जैसे हमारे यहाँ पे तो ए ने पहले ब्लॉक माइन किया, तो उनको क्या करना होता है, अपना आधा टाइम सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन में लगाना पड़ता है। मतलब इस नेटवर्क में कोई एक पर्टिकुलर माइनर ब्लॉक माइन करेगा और उसके बाद जो रिमेनिंग माइनर्स होंगे उनको उसको वेरीफाई वैलिडेट करना पड़ेगा। इससे होता क्या है कि उनका जो मेन टाइम है, जो उनको जिस टाइम उनको माइनिंग करनी चाहिए उस टाइम उनको करना पड़ा वेरीफाई वैलिडेशन में अपना काफी ज्यादा एफर्ट और एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इससे हो क्या है कि वो कम लेस और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर पा रहे हैं, लेस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की प्रोसेस कर पा रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर ब्लॉक यहाँ पे माइन होगा एक माइनर के द्वारा, फिर उसके बाद उसको वेरीफाई वैलिडेट होगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनको जो टाइम माइनिंग पे लगना चाहिए था अब वो क्या लग रहा है वेरीफाई वैलिडेशन में चला जा रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं कर पा रहे। और अगर ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड जो प्रोसेस होगा वो कितना होगा, वो हमारा काफी कम हो जाएगा। जहां पे अगर आप वीजा की बात करेंगे जो थाउजेंड ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड करते हैं, ब्लॉकचेन में अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बहुत ही कम है, और आने वाले टाइम में और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी जब ये नेटवर्क और बड़ा हो जाएगा। क्योंकि फिर पूरे इंटायर नेटवर्क को हर एक पहले तो ब्लॉकचेन का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा इंटायर नेटवर्क है, इनको पहले तो ये जो पूरी ब्लॉकचेन है सबको मेंटेन करनी है, सबको ध्यान रखना है इसका, और ये ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में और बड़ी होगी और बड़ी होगी। तो इतना पहले तो इसको मेंटेनेंस पे ध्यान दो, फिर साथ ही साथ सबको वेरीफाई वैलिडेट करो, क्योंकि अब यहाँ पे तो कम है, अगर नंबर ऑफ जैसे यहाँ माइनस इंक्रीज होंगे तो सबको वेरीफाई वैलिडेट करने की भी जिम्मेदारी होगी सारे माइनर्स की। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जैसे हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स ना हो इसीलिए शार्डिंग का यूज किया गया। तो शार्डिंग क्या है, शार्डिंग में कहा गया कि ये जो हमारी मैंने यहाँ पे ब्लॉकचेन को इस डेटाबेस के द्वारा दिखाया है कि बात समझ लीजिए ये हमारी ब्लॉकचेन खूब बड़ी सी एक ब्लॉकचेन है, ठीक है। तो इस बड़ी सी ब्लॉकचेन को प्रोसेस करने से अच्छा है, शार्डिंग कहता है कि क्यों ना इस ब्लॉकचेन को हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर दें डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस, मतलब छोटे छोटे डेटाबेस में इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। इससे क्या होगा कि इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये छोटे छोटे डेटाबेस है इसको डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में देंगे, मतलब क्या करेंगे ये सेट ऑफ जो माइनस है वो सिर्फ इस डेटाबेस से मतलब इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन से बात करेंगे, ये जो माइनस है सेट ऑफ माइनस ये सिर्फ इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन से बात करेंगे, और जो ये सेट ऑफ माइनस है ये सिर्फ इस पर्टिकुलर सेट ऑफ ब्लॉकचेन को बात करेंगे। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो इनके ऊपर लोड पड़ा था, जहां पे पहले माइनस को ये पूरे पूरे ब्लॉकचेन को करना पड़ता था, वेरीफाई वैलिडेट करना पड़ता था, मेंटेन करना पड़ता था, अब इन माइनस को सिर्फ और सिर्फ किसको वेरीफाई वैलिडेट करना है, इस छोटे से डेटाबेस कह लीजिए या फिर इस छोटे से ब्लॉकचेन को। तो इससे जो लोड था वो क्या हो गया, पूरी तरह से स्प्लिट हो गया। माइनस का एफर्ट अब क्या हो गया, जितना एफर्ट लगाना पड़ा था पूरी ब्लॉकचेन को मेंटेन करने में उसमें भी नहीं लगेगा। और अब इससे क्या होगा, माइनस क्या ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो अपने ब्लॉकचेन से बिल्ड करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, समय दे पाएंगे ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में, ना कि सिर्फ वेरीफाई वैलिडेट में उनका ज्यादा समय चला जाएगा। तो यही चीज है शार्डिंग। अब शार्डिंग के क्या क्या और एडवांटेज है, पहली चीज तो ट्रांजैक्शन पर सेकंड इंक्रीज होंगे, मैंने दिखाई दिया क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो हमारे ब्लॉकचेन की जब छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड हो जाएगी तो हर एक पर्टिकुलर माइनर को हर एक पर्टिकुलर नेटवर्क को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लॉकचेन को वेरीफाई वैलिडेट करना होगा, तो अपना ज्यादा टाइम कहां पे दे पाएगी, माइनिंग पे दे पाएगी, तो ट्रांजैक्शन पर सेकंड की तरह से हमारे बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज पावरफुल और एक्सपेंसिव कंप्यूटर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भाई क्यों जरूरत पड़ेगी, पावरफुल और एक्सपेंसिव कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है जब इतनी बड़ी ब्लॉकचेन को मेंटेन करना है, फिर वेरीफाई वैलिडेट करना है, इस तरह की चीजें करनी है। मगर शार्डिंग में क्या हुआ, छोटी सी डेटाबेस में छोटा सा ब्लॉकचेन है, सिर्फ उसी को वेरीफाई वैलिडेट करना है। इसमें मोर वैलिडेटर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमें पावरफुल और एक्सपेंसिव कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, तो सीधी सी बात है हमें आराम से हम कोई भी वैलिडेटर बन सकता है। और जब हम बात करते हैं इथेरियम में, तो इथेरियम में पता है कि 32 ETH है कि आप वैलिडेटर बन जाते हो, एनर्जी कंजप्शन रिड्यूस होगा क्योंकि पावरफुल एक्सपेंसिव कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि शार्डिंग हमें देती है, इसीलिए शार्डिंग का आने वाले टाइम में आप काफी ज्यादा यूज देखने जा रहे हैं।
बट शार्डिंग से पहले जो आप चीज देखोगे वो होगी बेकॉन चेन। अभी बेकॉन चेन क्या है? बेसिकली बेकॉन चेन कुछ नहीं, यही है एक तरीका जिसकी वजह से प्रूफ ऑफ स्टेक को इंप्लीमेंट किया जाएगा। जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगी, जब ये हमारी इथेरियम मेननेट के साथ जुड़ जाएगी, अभी बेकॉन चेन पैरेलली चल रही है, मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक जो है हमारी अभी पूरी तरह से हमारी एक तरह से कहेंगे तो इथेरियम मेननेट में इंटीग्रेट नहीं हुई, राइट? बेकॉन चेन अपनी अलग से चल रही है, अपना प्रूफ ऑफ स्टेक का जो कुछ क्रिप्टोकरेंसी से यूज कर रही है, बट अभी भी इथेरियम मेननेट में यूज नहीं हो रही है। जब ये चीज हमारी इथेरियम मेननेट के साथ हो जाएगी, और जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट देखा उसमें था भी 2021 2022 तक में ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे दोनों सिस्टम। उसके बाद जब ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे तब जाके इसमें शार्ड चेन को इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसके साथ जोड़ा जाएगा, और तब जाके आप देखेंगे शार्ड चेन बेकॉन चेन और इथेरियम मेननेट का एक कॉम्बिनेशन, और ये बहुत ही वंडरफुल कॉम्बिनेशन है क्योंकि इससे So he is saying this 1 year back. 1 year back. Okay, so this whole video was created 1 year back. Probably this single part was created far later. This is 2023 July, 2022 July. This was updated. Let me ask ChatGPT whether this was actually done or not. Bacon, bacon chain, cryptos.
काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे हमारे आने वाले फ्यूचर में, और आप देखेंगे कि So it seems like a lot of things are going to be happening in crypto the next year. The next upgrade in Ethereum 2.0 is going to happen where sharding would be added. Proof of stake is already a part of Ethereum 2.0. Blockchain is going to half its, what do you call it, the cycles that happen in blockchain. What happens in blockchain after a certain amount of time or a certain amount of blocks, the difficulty level is increased. Or what happens in blockchain? The reward is halved. Along with the difficulty, I don't know. So we'll probably should start put some money in blockchain right now. This is nice. I have started studying this, and probably by 2-3 months, I would get an idea about whether to where to if I want to invest or not. Probably I should save some money to invest in blockchain. कि मे बी जो बिटकॉइन है उसको थोड़ा लोग डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया, बिकॉज बिटकॉइन अभी जो प्रूफ ऑफ वर्क का यूज़ कर रहा है वो काफ़ी, मैं कहूँगा, एक तरह से हार्मफुल है।
इन टर्म्स ऑफ आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, इन टर्म्स ऑफ लाइक इतने एक्सपेंसिव सिस्टम्स की बात करो, तो इसलिए भी एक तरह से मैं कहूँगा हाँ मे बी इन द फ्यूचर आप बिटकॉइन इतना अब बिटकॉइन में शायद कुछ अपग्रेड होते नहीं होता, हाँ तो प्रूफ ऑफ वर्क चलता रहा तो मे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है बिटकॉइन में। तो आई होप आप जा रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स की, तो आइए शुरू करते हैं। तो ऑल्ट कॉइन क्या है? ऑल्ट कॉइन्स सिंपली वो कॉइन्स होते हैं जो कि बिटकॉइन्स होंगे। हाँ, थोड़ा इसी तरह की डेफिनेशन है इसकी। मैं बिटकॉइन्स को छोड़ के जितने भी कॉइन्स अभी आप देख रहे हैं मार्केट में, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज आप देख रहे हैं मार्केट में, उन सबको ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो इसमें होता है हमारे लिट कॉइन हो गया, थीटा हो गया, थेटर हो गया, चेन लिंक, बाइनेंस कॉइन, कार्डिनो, मतलब इस तरह की जो डिफरेंट डिफरेंट आप क्रिप्टो करेंसी देख रहे हैं मार्केट में, इन्हीं को हम बस ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। इससे ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स कुछ भी नहीं होते, कॉइन्स अदर देन बिटकॉइन्स। अब क्वेश्चन ये होता है तो ऑल्ट कॉइन्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी जब बिटकॉइन पहले से ही था? क्योंकि बिटकॉइन जो था उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी, या फिर कुछ फीचर्स थे जो लोगों को लगा कि और ऐड किए जा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, नई नई क्रिप्टो करेंसी डेवलप की, और उस नई क्रिप्टो करेंसी में हो सकता है क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हो सकता है कुछ कुछ चीजें सिमिलर हो बिटकॉइन के, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो सिमिलर ना हो बिटकॉइन के। जैसे कि हमारी कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें कंसेंसस प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, काफी डिफरेंट हो सकते हैं जो यूज करती है, हमारा बिटकॉइन यूज होता है प्रूफ ऑफ वर्क, तो हो सकता है कि वो कुछ और कंसेंसस प्रोटोकॉल यूज करें। हो सकता है कि उनके पास कुछ नई कैपेबिलिटीज हो, क्योंकि भाई बिटकॉइन तो हमारा पहला कॉइन था, तो डेफिनेटली उसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी उसको जब देखा गया तो सोचा गया ओके तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छी कैपेबिलिटी वाला कोई और कॉइन डेवलप कर लेते हैं। तो हो सकता है ये और कॉइन में क्या नई कैपेबिलिटीज हो, नई कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जैसे कि हमारे जो इथेरियम है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, इन तरह की चीजें कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें भी थी। और बात करें अगर हम अब तक की कितनी ऑल्ट कॉइन्स इस समय की जनरेट हो चुकी हैं, तो मार्च के रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक 9000 क्रिप्टो करेंसीज इस समय मार्केट में है, और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज है वो इथेरियम और बाइनेंस कॉइन है। ये लार्जेस्ट मतलब इस समय ऑल्ट कॉइन्स है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन को होल्ड कर रही है मार्च 2021 के हिसाब से। और इससे ज्यादा ऑल्ट कॉइन बताने के लिए बहुत कुछ है नहीं, अगर आपको डेफिनेटली इस पे थोड़ा रिसर्च करना है तो मैं आपको वेबसाइट रेफर कर देता हूं, आप जाके यहां पे उसको रेफर कर सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं और ये सारी चीजें, क्योंकि ये आई थिंक ये उन लोगों के लिए स्पेशली ज्यादा यूजफुल है जो कि इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि हाँ मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो डेफिनेटली ये उनके लिए काफी ज्यादा अच्छी चीज है, डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। मगर अगर आपने बिटकॉइन का कोर्स देखा तो आधी चीज आपको पता ही चल चुकी है, बट आप ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो नई नई कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई नई कैपेबिलिटी जो ऐड हुई है, आप डिफरेंट उसके बारे में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उनकी ऑफिशियल कॉइन पे मतलब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट उस पे विजिट करो, वहां पे आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर एक जनरल ओवरव्यू के लिए मुझे वेबसाइट काफी अच्छी लगती है जिसको मैं आपको जरूर रेफर करना चाहूंगा, और वो वेबसाइट है हमारी इन्वेस्टर की। डेफिनेटली मैं यहाँ पे कोई भी चीज बोलूं, मैं आपको कोई प्रमोशन नहीं कर रहा किसी भी चीज का, या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ इन्वेस्ट करिए करेंसी में, इट्स जस्ट यहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ऑल्ट कॉइन्स के बारे में है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे बिटकॉइन है या फिर ब्लॉकचेन है बड़ी अच्छी तरीके से दी है, तो आप यहाँ पे भी इसको रेफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे टाइप्स ऑफ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में मैंने बताया, माइनिंग बेस्ड, स्टेबल कॉइन्स, सिक्योरिटी टोकन्स, यूटिलिटी टोकन्स, तो बहुत तरह की चीजें यहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएंगी। तो ये है हमारे ऑल्ट कॉइन्स। एंड कांग्रेचुलेशन, अगर आपने मेरा पूरा कोर्स देखा है, अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक मेरे सारी वीडियो देखे तो पहले आपको मैं कांग्रेचुलेशन दूंगा। अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हो, डेफिनेटली हो सकता है कि आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो या अपना पहली बार मेरे चैनल विजिट करो, तो भी कोई बात नहीं, आपको भी कांग्रेचुलेशन, आपने एक वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपने मेरा कोर्स नहीं देखा तो डेफिनेटली मेरे ब्लॉग का पूरा कोर्स देख सकते हो, पूरे चैनल पे अवेलेबल है, साथ ही साथ मैंने नए नए कोर्सेज अपलोड कर दिए हैं, सॉलिड वीडियो पाइथन के भी, आप वो भी उसको रेफर कर सकते हो। तो आई होप आपको कोर्स करने में मजा आया होगा, और आई होप अगर आप वीडियो से देखा तो आपको वीडियो खत्म करने में मजा आया होगा। अगर आपको मेरे से कोई कॉन्टैक्ट करना है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी, और साथ ही साथ आप मेरी कोडिटी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे लोग इंटरेक्ट कर सकते हो। कोडिटी कम्युनिटी जैसे मैं बता दूं कि आप अपने डिस्कशन और लोगों के साथ कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई इस तरह का कोई जेन्युइन डाउट है जो आपको लगता है अपने लाइक क्या करना चाहिए आगे जाके, कुछ इस तरह का डाउट है, डेफिनेटली आप मुझे मेरी कोडिटी वाली इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, तो अब हम लोग वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उसे प्लीज कमेंट करिएगा। When I reached out to this guy, uh, there is someone called Tejas Boya who Big Banana. Is this a meme or he actually meant it? How to look someone up in Discord? Discord is very friendly. I mean, I did not. I don't need to look up how to use this, where to find this. Everything is such a so many features, but then you also get to. I mean, there are so many features, but still things are so simple. Wow. Okay. So congratulations to me and you all, the zero viewers that are watching me. We have completed a 6-hour course. That's a record time. Like staying consistent. I think just because I'm doing this whole mockery of having a mic in front of me, it somehow is helping me. I mean, this is amazing. I am so happy that I just randomly started doing something and I'm continuing with that. Hmm, interesting.
We have, how long have we been live? It has already been 1 hour. One watching. That is me who's watching. One watching. That is me who's watching. I am watching myself. A Shuvraception. This is sad. Mikey Musumeki. We would also be doing a whole playlist of me sitting and watching and me taking note of Brazilian Jiu Jitsu. भारत में रहने वाला हूँ। Not sure what he's saying. मीडिया का भी हिफाजत करता हूँ, भाई का भी। अगर बीच में कोई आएगा ना माँ कसम ऐसे काटता हूँ, अस्तूरा की तरह। I need translation. चाकू एनी टाइम रखता हूँ, इसको बोलते हैं पेवर स्टील। Oh, be careful with your knife. What he's saying? जरूरत नहीं है मैंने, दिखाते हैं खाली। What is he saying? He's like, he treats me like a daughter and he'll take good care of me. He treats you like a son. Oh, But he's also a protector if someone... does something wrong, he will kill him with a knife. Yeah. Don't worry, don't worry. सर, Don't worry. देख के लीजिए। और ऐसा भी है ना? आता है। Do karate. आता है। लड़की को बचा लेता हूँ, लेकिन लौंडों को उड़ा देता हूँ। He's very protective over Priya, apparently. Nice meeting you. Bye bye. भारत में रहने वाला हूँ। Not sure what he's saying. मीडिया का भी हिफाजत I went from this to this in less than 24 hours, and this is how I did it. Influencers use a number of tricks to fool you, and I'm about to tell you all their secrets. The first one is posture, shoulders back and chest out. This makes you look broader and more confident. The second trick is professional lighting, which makes a huge difference. This adds shadows and makes your muscles look way more defined. I'm already looking so much more shredded, but we can still improve. Trick 3 is tanning. I use fake tan to give myself more color and add definition. Whoa, this makes a huge difference, but this isn't my final form. The biggest trick of all is pump, a big workout to make my muscles look jacked. After all that, and only 4 hours later, I present to you my final form. Be careful what you believe on the internet. I went from this to this in less than 24 hours, and this is how I did it. Influencers use a number of tricks to fool you, and I'm about to tell you. If I watch something twice, would the total views be 2? Okay, nice. So if I keep doing that. Anyway, if someone else is watching, we totally have ruined their expectations. Like, by I started watching reels.
finally moved into a new housing movement. These things are so distracting. Crypto in blockchain. Okay. So we had a plan. Let's bring that out. We have a list of to-dos. Can we convert them into yeah, let's start with this one. What? Okay. This one would be having heavy information. What does it mean to have a Bitcoin? Sure. Many people have heard of Bitcoin, that it's a fully digital currency with no government to issue it, and that no banks need to manage accounts and verify transactions. And also that no one really knows who invented it. And yet, many people don't know the answer to this question, at least not in full. To get there, and to make sure that the technical details underlying the answer actually feel motivated, what we're going to do is walk through, step by step, how you might have invented your own version of Bitcoin. We'll start with you keeping track of payments with your friends using a communal ledger, and then as you start to trust your friends and the world around you less and less, and if you're clever enough to bring in a few ideas from cryptography to help circumvent the need for trust, what you end up with is what's called a cryptocurrency. You see, Bitcoin is just the first implemented example of a cryptocurrency, and now there are thousands more on exchanges with traditional currencies. Walking the path of inventing your own can help to set the foundations for understanding some of the more recent players in the game, and recognizing when and why there's room for different design choices. In fact, one of the reasons I chose this topic is that in the last year, there's been a huge amount of attention and investment and, well, honestly, hype directed at these currencies. And I'm not going to comment or speculate on the current or future exchange rates, but I think we'd all agree that anyone looking to buy a cryptocurrency should really know what it is. And I don't just mean in terms of analogies with vague connections to gold mining. I mean an actual direct description of what the computers are doing when we send, receive, and create cryptocurrencies. One thing worth stressing, by the way, is that even though you and I are going to dig into the details here, and that takes meaningful time, you don't actually need to know those details if you just want to use the cryptocurrency. Just like you don't need to know the details of what happens under the hood when you swipe a credit card. Like any digital payment, there's lots of user-friendly applications that let you just send and receive the currencies without thinking about what's going on. The difference is that the backbone underlying this is not a bank that verifies transactions. Instead, it's a clever system of decentralized trustless verification based on some of the math born in cryptography. But to start, I want you to actually set aside the thought of cryptocurrencies and all that just for a few minutes. We're going to begin the story with something more down to earth: ledgers and digital signatures. Oh god. If you and your friends exchange money pretty frequently, paying your share of the dinner bill and such, it can be inconvenient to exchange cash all the time. So you might keep a communal ledger that records all of the payments that you intend to make some point in the future. Alice pays Bob $20, Bob pays Charlie $40, things like that. This ledger is going to be something public and accessible to everyone, like a website where anyone can go and just add new lines. And let's say that at the end of every month, you all get together, look at the list of transactions, and settle up. If you spent more than you received, you put that money in the pot, and if you received more than you spent, you take that money out. So the protocol for being part of this very simple system might look like this.
anyone can add lines to the ledger, and at the end of every month, you all get together and settle up. Now, one problem with a public ledger like this is that anyone can add a line. So what's to prevent Bob from going and writing Alice pays Bob $100 without Alice approving? How are we supposed to trust that all of these transactions are what the sender meant them to be? Well, this is where the first bit of cryptography comes in: digital signatures. Like handwritten signatures, the idea here is that Alice should be able to add something next to that transaction that proves that she has seen it and that she's approved of it. And it should be infeasible for anyone else to forge that signature. At first, it might seem like a digital signature shouldn't even be possible. I mean, whatever data makes up that signature can just be read and copied by a computer, so how do you prevent forgeries? Well, the way this works is that everyone generates what's called a public key private key pair, each of which looks like some string of bits. The private key is sometimes also called a secret key, so that we can abbreviate it as SK while abbreviating the public key as PK. Now, as the name suggests, this secret key, it's something you want to keep to yourself. In the real world, your handwritten signature looks the same no matter what document you're signing. But a digital signature is actually much stronger, because it changes for different messages. It looks like some string of ones and zeros, commonly something like 256 bits, and altering the message even slightly completely changes what the signature on that message should look like. Speaking a little more formally, producing a signature involves a function that depends both on the message itself and on your private key. The private key ensures that only you can produce that signature, and the fact that it depends on the message means that no one can just copy one of your signatures and then forge it on another message. Hand in hand with this is a second function used to verify that a signature is valid. And this is where the public key comes into play. All it does is output true or false to indicate if this was a signature produced by the private key associated with the public key that you're using for verification. I won't go into the details of how exactly both these functions work, but the idea is that it should be completely infeasible to find a valid signature if you don't know the secret key. Specifically, there's no strategy better than just guessing and checking random signatures, which you can check using the public key that everyone knows. Now think about how many signatures there are with a length of 256 bits. That's 2 to the power of 256. This is a stupidly large number. The power is output true or false to indicate if this was a signature produced by the private key associated with the public key that you're using for verification. I won't go into the details of how exactly both these functions work, but the idea is that it should be completely infeasible to find a valid signature if you don't know the secret key. Specifically, there's no strategy better than just guessing and checking random signatures, which you can check using the public key that everyone knows. Now think about how many signatures there are with a length of 256 bits. That's 2 to the power of 256. This is a stupidly large number. To call it astronomically large would be giving way too much credit to astronomy. In fact, I made a supplemental video devoted just to illustrating what a huge number this is. Right here, let's just say that when you verify that a signature against a given message is valid, you can feel extremely confident that the only way someone could have produced it is if they knew the secret key associated with the public key you used for verification. Now, making sure that people sign transactions on the ledger is pretty good, but there's one slight loophole. If Alice signs a transaction like Alice pays Bob $100, even though Bob can't forge Alice's signature on a new message, he could just copy that same line as many times as he wants. I mean, that message signature combination remains valid. To get around this, what we do is make it so that when you sign a transaction, the message has to also include some sort of unique ID associated with that transaction. That way, if Alice pays Bob $100 multiple times, each one of those lines on the ledger requires a completely new signature. Alright, great. Digital signatures remove a huge aspect of trust in this initial protocol. But even still, if you were to really do this, you would be relying on an honor system of sorts.
Namely, you're trusting that everyone will actually follow through and settle up in cash at the end of each month. What if, for example, Charlie racks up thousands of dollars in debt and just refuses to show up? The only real reason to revert back to cash to settle up is if some people, I'm looking at you, Charlie, owe a lot of money. So maybe you have the clever idea that you never actually have to settle up in cash as long as you have some way to prevent people from spending too much more than they take in. Maybe what you do is start by having everyone pay $100 into the pot, and then have the first few lines of the ledger read, Alice gets $100, Bob gets $100, Charlie gets $100, etc. Now, just don't accept any transactions where someone is spending more than they already have on that ledger. For example, if the first two transactions are Charlie pays Alice $50 and Charlie pays Bob $50, if he were to try to add Charlie pays you $20, that would be invalid as if he had never signed it. Notice, this means that verifying a transaction requires knowing the full history of transactions up to that point. And this is, more or less, also going to be true in cryptocurrencies, though there is a little room for optimization. What's interesting here, and this is, more or less, also going to be true in cryptocurrencies. That would be invalid, Charlie pays Alice $50, and Charlie pays Bob $50. If he were to try to add Charlie pays you $20, that would be invalid as if he had never signed it. Notice, this means that verifying a transaction requires knowing the full history of transactions up to that point. And this is, more or less, also going to be true in cryptocurrencies, though there is a little room for optimization. What's interesting here is that this step removes the connection between the ledger and actual physical US dollars. In theory, if everyone in the world was using this ledger, you could live your whole life just sending and receiving money on this ledger without ever having to convert to real US dollars. In fact, to emphasize this point, let's start referring to the quantities on the ledger as ledger dollars, or LD for short. You are, of course, free to exchange ledger dollars for real US dollars. For example, maybe Alice gives Bob a $10 bill in the real world. In exchange for him adding and signing the transaction, Bob pays Alice 10 ledger dollars to this communal ledger. But exchanges like that, they're not going to be guaranteed by the protocol. It's now more analogous to how you might exchange dollars for euros, or any other currency on the open market. It's just its own independent thing. This is the first important thing to understand about Bitcoin, or any other cryptocurrency. What it is a ledger. The history of transactions is the currency. Of course, with Bitcoin, money doesn't enter the ledger with people buying in using cash. I'll get to how new money enters the ledger in just a few minutes. But before that, there's actually an even more significant difference between our current system of ledger dollars and how cryptocurrencies work. So far, I've said that this ledger is in some public place, like a website where anyone can add new lines. But that would require trusting a central location, namely, who hosts the website, who controls the rules of adding new lines. To remove that bit of trust, we'll have everybody keep their own copy of the ledger. Then when you want to make a transaction, like Alice pays Bob $100 ledger dollars, what you do is broadcast that out into the world for people to hear and to record on their own private ledgers. But unless you do something more, this system is absurdly bad. How could you get everyone to agree on what the right ledger is? When Bob receives a transaction, like Alice pays Bob 10 ledger dollars, how can he be sure that everyone else received and believes that same transaction? That he'll be able to later on go to Charlie and use those same 10 ledger dollars to make a transaction? Really, imagine yourself just listening to transactions being broadcast. How can you be sure that everyone else is recording the same transactions and in the same order? This is really the heart of the issue. This is an interesting puzzle. Can you come up with a protocol for how to accept or reject transactions, and in what order, so that you can feel confident that anyone else in the world who's following that... Let us do this thought experiment. But am I still alive? Yeah. So the question is, okay, you are getting to hear whatever spending is going on. Alice is paying. How do we verify?
public key. We use but that would mean that we need to have the public key for every wallet. I'll assume that the public key would come separately attached with the transaction, so it would be a part of that transaction itself. What else? Same protocol has a personal ledger that looks the same as yours. This is the problem addressed in the original Bitcoin paper. At a high level, the solution that Bitcoin offers is to trust whichever ledger has the most computational work put into it. I'll take a moment to explain exactly what that means. It involves this thing called a cryptographic hash function. The general idea that we'll build to is that if you use computational work as a basis for what to trust, you can make it so that fraudulent transactions and conflicting ledgers would require an infeasible amount of computation to bring about. Again, I'll remind you that this is getting well into the weeds beyond what anyone would need to know just to use a currency like this. But it's a really cool idea, and if you understand it, you understand the heart of Bitcoin and of other cryptocurrencies. So first things first, what's a hash function? The inputs for one of these functions can be any kind of message or file, it really doesn't matter. And the output is a string of bits with some kind of fixed length, like 256 bits. This output is called the hash or the digest of the message, and the intent is that it looks random. It's not random, it always gives the same output for a given input. But the idea is that if you slightly change the input, maybe editing just one of the characters, the resulting hash changes completely. In fact, for the hash function that I'm showing here, called SHA-256, the way the output changes as you slightly change that input is entirely unpredictable. You see, this is not just any hash function, it's a cryptographic hash function. That means it's infeasible to compute in the reverse direction. If I show you some string of ones and zeros and ask you to find an input so that the SHA-256 hash of that input gives this exact string of bits, you will have no better method than to just guess and check. And again, if you want a feel for how much computation would be needed to go through 2 to the 256 guesses, just take a look at the supplement video. I actually had way too much fun writing that thing. You might think that if you just really dig into the details of how exactly this function works, you could reverse engineer the appropriate input without having to guess and check. But no one has ever figured out a way to do that. Interestingly, there's no cold, hard, rigorous proof that it's hard to compute in the reverse direction. And yet, a huge amount of modern security depends on cryptographic hash functions and the idea that they have this property. If you were to look at what algorithms underlie the secure connection that your browser is making with YouTube right now, or that it makes with your bank, you will likely see the name SHA-256 show up in there. For right now, our focus will just be on how such a function can prove that a particular list of transactions is associated with a large amount of computational effort. Imagine someone shows you a list of transactions, and they say, hey, I found a special number so that when you put that number at the end of this list of transactions and apply SHA-256 to the entire thing, the first 30 bits of that output are all zeros. How hard do you think it was for them to find that number? Well, for a random message, the probability that a hash happens to start with 30 successive zeros is 1 in 2 to the 30, which is about 1 in a billion. And because SHA-256 is a cryptographic hash function, the only way to find a special number like that is just guessing and checking. So this person almost certainly had to go through about 1 billion different numbers before finding this special one. And once you know that number, it's really quick to verify. You just run the hash and see that there are 30 zeros. So in other words, you can verify that they went through a large amount of work, but without having to go through that same effort yourself. This is called a proof of work. And importantly, all of this work is intrinsically tied to the list of transactions. If you change one of those transactions, even slightly, it would completely change the hash. So you'd have to go through another billion guesses to find a new proof of work, a new number that makes it so that the hash of the altered list together with this new number starts with 30 zeros. So now think back to our distributed ledger situation. Everyone is there broadcasting transactions, and we want a way for them to agree on what the correct ledger is. As I said, the core idea behind the original Bitcoin paper is to have everyone trust whichever ledger has the most work put into it. The way this works is to first organize a given ledger into blocks,
where each block consists of a list of transactions together with a proof of work. That is, a special number so that the hash of the whole block starts with a bunch of zeros. For the moment, let's say that it has to start with, 60 zeros, but later we'll return back to a more systematic way you might want to choose that number. In the same way that a transaction is only considered valid when it's signed by the sender, a block is only considered valid if it has a proof of work. And also, to make sure that there's a standard order to these blocks, we'll make it so that a block has to contain the hash of the previous block at its header. That way, if you were to go back and change any one of the blocks, or to swap the order of two blocks, it would change the block that comes after it, which changes that block's hash, which changes the one that comes after it, and so on. That would require redoing all of the work, finding a new special number for each of these blocks that makes their hashes start with 60 zeros. Because blocks are chained together like this, instead of calling it a ledger, it's common to call it a blockchain. As part of our updated protocol, we'll now allow anyone in the world to be a block creator. What that means is that they're going to listen for transactions being broadcast, collect them into some block, and then do a whole bunch of work to find a special number that makes the hash of that block start with 60 zeros. Then once they find it, they broadcast out the block that they found. To reward a block creator for all this work, when she puts together a block, we'll allow her to include a very special transaction at the top of it, in which she gets, say, 10 ledger dollars out of thin air. This is called the block reward, and it's an exception to our usual rules about whether or not to accept transactions. It doesn't come from anyone, so it doesn't have to be signed, and it also means that the total number of ledger dollars in our economy increases with each new block. Creating blocks is often called mining, since it requires doing a lot of work, and it introduces new bits of currency into the economy. But when you hear or read increase, so it doesn't have to be signed, and it also means that the total number of ledger dollars in our economy increases with each new block. Creating blocks is often called mining, since it requires doing a lot of work, and it introduces new bits of currency into the economy. But when you hear or read about miners, keep in mind that what they're really doing is listening for transactions, creating blocks, broadcasting those blocks, and getting rewarded with new money for doing so. From the miner's perspective, each block is kind of like a miniature lottery, where everyone is guessing numbers as fast as they can until one lucky individual finds a special number that makes the hash of the block start with many zeros.
and they get the reward. For anyone else who just wants to use the system to make payments, instead of listening for transactions, they all start listening just for blocks being broadcast by miners and updating their own personal copies of the blockchain. Now, the key addition to our protocol is that if you hear two distinct blockchains with conflicting transaction histories, you defer to the longest one, the one with the most work put into it. If there's a tie, just wait until you hear an additional block that makes one of them longer. So even though there's no central authority and everyone is maintaining their own copy of the blockchain, if everyone agrees to give preference to whichever blockchain has the most work put into it, we have a way to arrive at decentralized consensus. To see why this makes for a trustworthy system, and to understand at what point you should trust that a payment is legit, it's actually really helpful to walk through exactly what it would take to fool someone using this system. Maybe Alice is trying to fool Bob with a fraudulent block. Namely, she tries to send him one that includes her paying him 100 ledger dollars, but without broadcasting that block to the rest of the network. That way, everyone else still thinks that she has those 100 ledger dollars. To do this, she would have to find a valid proof of work before all of the other miners, each working on their own block. And that could definitely happen. Maybe Alice just happens to all has Bob with a fraudulent block. Namely, she tries to send him one that includes her paying him 100 ledger dollars, but without broadcasting that block to the rest of the network. That way, everyone else still thinks that she has those 100 ledger dollars. To do this, she would have to find a valid proof of work before all of the other miners, each working on their own block. And that could definitely happen. Maybe Alice just happens to win this miniature lottery before everyone else. But Bob is still going to be hearing the broadcasts made by other miners. So to keep him believing this fraudulent block, Alice would have to do all of the work herself to keep adding blocks on this special fork in Bob's blockchain that's different from what he's hearing from the rest of the miners. Remember, as per the protocol, Bob always trusts the longest chain that he knows about. Alice might be able to keep this up for a few blocks if just by chance she happens to find blocks more quickly than the rest of the miners on the network all combined. But unless she has close to 50% of the computing resources among all of the miners, the probability becomes overwhelming that the blockchain that all of the other miners are working on grows faster than the single fraudulent blockchain that Alice is feeding to Bob. So, after enough time, Bob's just going to reject what he's hearing from Alice in favor of the longer chain that everyone else is working on. Notice, that means that you shouldn't necessarily trust a new block that you hear immediately. Instead, you should wait for several new blocks to be added on top of it. If you still haven't heard of any longer blockchains, you can trust that this block is part of the same chain that everyone else is using. And with that, we've hit all the main ideas. This distributed ledger system based on a proof of work is more or less how the Bitcoin protocol works and how many other cryptocurrencies work. There's just a few details to clear up. Earlier, I said that the proof of work might be to find a special number so that the hash of the block starts with 60 zeros. Well, the way the actual Bitcoin protocol works is to periodically change that number of zeros so that it should take, on average, 10 minutes to find a new block. So as there are more and more miners added to the network, the challenge actually gets harder and harder in such a way that this miniature lottery only has about one winner every 10 minutes. Many newer cryptocurrencies actually have much shorter block times than that. Well, the way the actual Bitcoin protocol works is to periodically
change that number of zeros so that it should take, on average, 10 minutes to find a new block. So as there are more and more miners added to the network, the challenge actually gets harder and harder in such a way that this miniature lottery only has about one winner every 10 minutes. Many newer cryptocurrencies actually have much shorter block times than that. And all of the money in Bitcoin ultimately comes from some block reward. In the beginning, these rewards were 50 Bitcoin per block. There's actually a great website you can go to called Block Explorer that makes it easy to look through the Bitcoin blockchain. And if you look at the very first few blocks on the chain, they contain no transactions other than that 50 Bitcoin reward to the miner. But every 210,000 blocks, which is about every 4 years, that reward gets cut in half. So right now, the reward is 12.5 Bitcoin per block. And because this reward decreases geometrically over time, it means there will never be more than 21 million Bitcoin in existence. However, this doesn't mean that miners will stop earning money. In addition to the block reward, miners can also pick up transaction fees. The way this works is that whenever you make a payment, you can purely optionally include a little transaction fee with it that's going to go to the miner of whichever block includes that payment. The reason you might do that is to incentivize miners to actually include the transaction that you broadcast into the next block. You see, in Bitcoin, each block is limited to about 2,400 transactions, which many critics argue is unnecessarily restrictive. For comparison, Visa processes an average of about 1,700 transactions per second, and they're capable of handling more than 24,000 per second. This comparatively slow processing on Bitcoin makes for higher transaction fees, since that's what determines which transactions miners choose to include in a new block. All of this is far from a comprehensive coverage of cryptocurrencies. There are still many nuances and alternate design choices that I haven't even touched. But my hope is that this can provide a stable wait but why style tree trunk of understanding for anyone looking to add a few more branches with further reading. Like I said at the start, one of the motives behind this is that a lot of money has started flowing towards cryptocurrencies. And even though I don't want to make any claims about whether that's a good or bad investment, I really do think that it's healthy for people getting into the game to at least know the fundamentals of the technology. As always, my sincerest thanks to those of you making this channel possible on Patreon. I understand that not everyone is in a position to contribute,
But if you're still interested in helping out, one of the best ways to do that is simply to share videos that you think might be interesting or helpful to others. I know you know that, but it really does help.